Hi, mom. Good evening, Priyash. How are you? I'm good, mom. How are you? I think a fresh haircut, huh? Did I? I don't know, probably. But I get more like the beard is growing up because I haven't had the time to do anything. I've been traveling and doing XYZ things. It's too much at the plate at the moment. I've just shared the YouTube link as well with you. Yeah, I just saw it. I saw it. I'm gonna just send it over. Thank you. You're looking good, Shalini. I'm halfway to my meeting. I just left it and came. Oh, really? Yeah. Priyash, did you get a chance to look at our Instagram? yeah. Since I've been following it, almost every day I'm getting a notification of new things getting posted. So that's good. The content quality has also improved. We need your input. We're still behind in trying to schedule everything Homemade ahead of peanut butter time. looks really, really appetizing. Again, I think who made this? Which Again, one? the homemade peanut butter. Ashish had posted that. That's really nice. Would you eat a whole Very melon as nice. a meal? That's quite good as well because you've got very good. The background is there in terms of what is exactly that you're talking about. With Which one? the melon one, Oh nutrition. yeah, that's me after eating my melon, and then I found those pictures. I just try and keep thinking of ideas from my everyday stuff. So That's quite nice. Perfect. The sound sleep one, I could just say, again, the main, when we have the text that's just coming too big. So probably if you would have expanded the sleeping baby and had most of the text in the caption, that would have been better. okay, I will give that feedback to who did it. Yeah. I quite like the fact that you have also put up a post on Join Us, which is good. That's Shalini's initiative. She's made like 4 or 5 different or The maybe even continuous call to 7 actions need to be there. The only thing is, when you're putting up Join Us, this is more for the joining the main community, I guess. Yeah, not for Instagram. That's fine. That's fine. Box breathing, that's quite good as well. I think you guys are getting into the zone. So we have one post that was Rahul's wife Pratima. It's got 11,000 views. So we just want to figure out what do we do to do that? There's no clear answer, but what's this mushroom and something? Who's making that? It's there in the story. That was added as a reel. That was Honey's recipe. Remember the one that This mushroom with and what sprouts is and that, all that. potatoes or what is it with it? Honey? Mushroom and potato. That looks so good. I've not had a single bite since morning. Orange meat. Good evening, everyone. Good morning there. Just gonna so your reels will blow up. Don't worry about that because you've started to getting, you see 426, 349, 483, 388. It's just with more consistency, this will just go up. I'm sorry, who's this? Yeah, that's Rahul's wife Pratima. I think she knows her game. Yeah, they've been doing that for some time. So yeah, it's really good. I took a personal lesson with them. That's really good. So you'll see the difference. Now, when you look at her reel, there's 2 very important things which are coming up over there. One is the energy, right? Yes. Second is the sound quality, and then the way that she's putting up. There's a hook. So right,
Voice is breaking. बाद गलती क्या ना करे. It's mentioned over there. And then how is my voice breaking? Yes. Am I audible? Right. Yes, Uh, Simrat. usage of a lot of images and then those pointers. That's a very clear-cut template that you could possibly look at. I think she would have worked on the script beforehand, what she's exactly going to talk about. Yeah. And one more thing that if you'll notice, she has tagged a lot of you guys as collaborators when this one was added. That means, it would have also taken up the good amount of views from your own individual accounts. So that's again adding people as collaborators. Then all of those GIFs, the last fifth point wherein the girl is dancing, they're all particular entertaining activities. So people want to see this kind of stuff. Right. So that's quite nice. So if you can have more of those kind from most of the people, that should really do the trick. And apart from keep doing recipes will definitely blow up in one way or the other. I mean, Honey does great job with the food. And if you can just have a little bit of more intensity, either in terms of visual editing or in terms of voiceovers, that should be good enough there. Question did I have? Oh, I have a question. A lot of times when you have these, like, people promote their own thing, and these are not even people they're just strangers, put their own handles. Do we leave it? Do we delete it? Like if you see on some post, or promote this on this. Pardon? Yeah. They put up in your comments as promote this on such and such that. Yeah. Ignore them. Let it be. It just, if they're going to be adding, so their goal is leverage their that somebody will click on their thing. Okay. Yeah. So we don't need to do anything about that. No, you don't need to do anything about it. In fact, if they're doing that, it's just going to be helping you in your engagement metric. Just fine. But what I would also like to see is, because we've got a lot of likes, every other post is having a good amount of likes, 20, 25, so on and so forth. If you can also encourage people to put up comments, what a great reel, what is this, blah blah blah, and you can tag other people to, or send across good quality reels. So when you're doing reels, right, everybody would be having their own individual connects as well, so they can simply share that reel in their inbox to people. So that's something that you could also give as an instruction कि जब भी reel डाल रहे हैं तो share करें with as many people as possible in their inbox. अपने story पर भी reshare कर सकते हैं. Individually they can reshare that reel in their stories. Those kind of activities. So reel जितना ज़्यादा लोगों के सामने आता रहेगा वो बढ़ती जाएगी. Understood. Ritu and I were doing this and we were having some trouble. Sometimes that share to your own story shows up and sometimes not. I don't know what the setting was, because I've shared some things to my own story, but then the other day that link just wasn't coming up. It was just something we could send through a message and not sharing. So your existing story that you uploaded, right? For example, I'm looking at your stories at the moment, and then there is this share icon, right? So that way, the existing story I can only send to individual people. Okay, but reels. If we talk about reels, no, it's giving the option add reel to your story. It should be on top. So if you just look at carefully, because it gives you both these options to add this reel to your story as well as send it to individual people as well. So just look at that. The very top option is add the reel to your story. No, I did, because I've added one to my story, but then one time it just wasn't. I don't know why. We'll have to figure it out. So this is also quite nice. Long working hours can wreak havoc on the body. So there's transition coming up. He's trying to put up different things. Efforts have been made. Yeah, I could do this, the peanut butter. So I'm just adding it to my story. So just ask everybody to do that. चाहे वो
all your existing members of the community, ask each one of them to add it to your story. Okay. Worst case scenario, everybody would be having at least 100 followers on their own Instagram. So at least 32 people in 200, 3200. So, you'll get some more traction. इसी तरीके से करना है. So it's all that way, share and care kind of an activity. Gotcha. But yeah, I would definitely suggest that, as you mentioned, Rahul's wife had created that kind of a reel. Just probably push them to create four or five more such kind of reels. Okay. Right? And have them posted in this coming month or so. So automatically your other reels will also get benefit, because this reel is going to give you more and more visibility. Yes. And उसके जरिए आपके दूसरे reels पे भी visibility आएगी. People are going to be looking at. Yeah. I think we can start. I mean, any specific. Good progress, Loveleen, and keep going. Good to see so much variety of content. I'm really impressed. And today, me and Sachin were discussing, we just caught up for a minute and we were just thinking that, from where you started to where you and the team are going, I think it's very promising and heartening to see how you are, not hesitating to explore and try new things. So good work, and good work, Priyesh, as well, along with the entire team. I also wanted to say today, me and Hitaishi both have a meeting that's clashing same time. So while I'll stay on for some time, and Hitaishi might try to join at the end, if her meeting gets over, but we both are just a little stuck. So leaving you in safe hands with Priyesh. And in case of something, Loveleen, I'm right around on my WhatsApp. Do tell me and I'll come back. Thank you. Thanks. Thank you. All right. So I think almost everybody has joined as well. So before we move on to today's topic, and by the way, आपका second last session है. So this is the only session जहाँ पे हम कुछ additional नई चीज सीखने वाले हैं. And from the next session onward, जो final session है, we'll be reflecting back on everything that we've learned, और क्या चीजें और improve करनी होंगी या कोई doubts होंगे. And I'll also give you a sneak peek into another scheduling tool, automating tool, जहाँ पे ना आपको Facebook के comments भी दिखेंगे, Instagram के comments भी दिखेंगे, and analytics भी आप देख पाओगे. But आज का जो main agenda है, that is going to be looking at WhatsApp, right? कि WhatsApp पर भी हम अपनी community कैसे build up करें. I'm sure a lot of you guys are already having different kinds of groups, right? और उन groups में maximum we have only 250 people that we can add to. So how do we combine all of these multiple groups into one single community with having 1,000 people in that? That is what we will see. WhatsApp business account को आप कैसे optimize कर सकते हो, wherein you can have all sort of your products listed over there, etc. So we'll have a look at that in just a bit. But before that, any questions, any doubts? How did your previous week's activity of groups go up? Are we set up with those groups, and have we tried to do any activities on them? Are we talking about our daily, like the Monday through Friday, our content postings? No. So last week we had studied about. Yeah. The Facebook groups, right, right. So I know some of us have. The others, I don't know. We haven't really had communication about that because I think two of us only put it up on our Excel sheet to show which groups we've joined. So honestly, I don't know. I did join 4 groups. I commented on one of them as well. So we'll just take it from there. I know Nitish, maybe he's at work, he's joined some. All right. I've joined some too. Okay, Honey has. Yeah. So we can also do one thing, कि जैसे you guys can come up together with, let's say, 10-15 ideal groups that we would want to be joining, and ask all of the community to become a part of that group. Those 15-20 groups, whatever that we have shortlisted. और उसके बाद, let's say one day, Loveleen ma'am, you go ahead and put up certain communication, and then rest everybody starts to reply to that. Everybody starts to comment on it. तो फिर जो बाकी के ग्रुप मेंबर्स है ना, जो हमारे जिन्हें नहीं पता कि हमारी कम्युनिटी है,
they'll also start seeing कि यार ये वाले post पे कितना engagement हो रहा है. So I think that would be better rather than कि हम individually 4-5 groups पे जाएं. Collectively as a pack, let's join 15 to 20 groups. And one day Loveleen ma'am can put up a post, second day Chetan sir can put up a post, somebody can put up, and then everybody else will get a notification कि इस group में क्या चीज add हुआ है. तो फिर सब एक साथ लग के wow, thanks, great information, kudos, blah blah blah, engagement दिखाएं. तो उन groups में भी जो group owners होंगे, they'll start understanding that okay, whenever there's a content coming from these individuals, तो इनके पास काफी engagement आ रहा है, and that is what they want. They want their group engagement metric to increase as well. Right? And आपका reach बढ़ेगा. Having said that, did you also get on to creating your own group, or you'd be doing that later? Not yet. Yes, we are. It's just on hold. Didn't Oh. get time. Yeah. Okay, no worries. Any other challenges? Any other questions before we get down to today's topic? We had spoken briefly about making. I think Ashish had mentioned that having our name trademarked. So what's the process for that? Process is a governmental process. So you'll have to first reach out to, let's say, a company secretary or a trademark specialist, right? Okay. You'll have to provide all of your specific logos and brands and names to them, right? There's a fee of 6,000 rupees that needs to be paid. In regards to trademark, ma'am, I have a team where we list all our brands and get trademarks done. I can get those procedure done. It's not much, 6,000 to 8,000, I guess. Yeah, 6,000 rupees, and whatever 6,000 the government charges, and probably 1,000, 2,000, whatever they will be charging. Okay, Shastri, thank you. I'll Yeah. connect with you on that. Perfect. Good. Anything else? Siddharth, I see your hand is raised. Yeah, hi Priyash. I had a question regarding I created this video on Lumen, and once I downloaded and saved it in my laptop, then went to Canva to add that THT logo, one slide for that. So, but I was not able to how I'll be adding music to that slide, because I created in Lumen. Music got from Which is the Lumen. last slide, है ना? Last slide wherein just the branding is coming. So what are you saying? So even if music nahi bhi hota, because that's going to stay for 0.5 seconds or less than that, right? So that's still fine. You can have it like that, or you could do ki. Priyash, we cannot hear you. I thought my connection. जो पूरा Lumen 5 पे We'll just wait for him to come back online. I can hear you guys. Yes. Now you're back. I'm back. Let me do one thing. I just switch off my camera. Sure. Today. Because I think there's some with my internet. Hi guys. Hello. Yes, now we can hear you. Okay, just give me 2 minutes. I'm just going to be sure. switching my connection. Sure. Siddharth, I'll answer it until then what I've done. So I have not been using music मतलब ये Canva से. पहले मैंने किया था but वो मैच नहीं करता है हमेशा अपने इंस्टाग्राम पे. तो सारा वीडियो बना के अगर वॉइस ओवर था वो किया मैंने, एक बारी कैनवा से भी किया, एक बारी डायरेक्टली इंस्टाग्राम से किया, फिर उसको इंस्टाग्राम से ही म्यूजिक वगैरह उसका किया ऐड. Did you hear what I said? Am I not audible? Am I audible? You're audible. Okay. Maybe Siddharth is not right now. So, Laveen, मेरा एक question है before. I mean, maybe it's a question that we can take it offline.
or it's up to you, we can take it here. So as you know that I've been running another community, of course, a parallel community on health. So I was just thinking, if I'm posting something on the page that I run, and if I collaborate THT with it, so in that case, this post will appear in both the pages. So will that be okay? And will I be stealing the show or stealing hit things here and there? So I mean, is that ethically okay or not? That's a question I have. Priyash would know that. So, if you're working as a team and you have a separate community, parallel community, and that is in line with the THT aspects, right? Then of course there's no problem with that, because that's going to give you a lot of reach, right? और आपको engagement मिलेगा. But for example, just in case that's a different line or a different community altogether, which are not in sync with each other, then I would say that don't do that. But if it is ultimately, वहां से आप इस community में भी आप फायदा ला रहे हैं, यहाँ पे भी sign-ups आ रहे हैं, people are filling it up, then please do it. Please do it, as long as it's going to be helping the community. And as I also said अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे that reel that we had added, वहां पर भी they had added collaborators, individual collaborators. Loveleen ma'am को tag किया था, मनोज sir को tag किया था. There were a couple of more people who were tagged and they were added as a collaborators. तो वो reel आपके individual reels में भी आ रही होगी. So do as much of that activity as possible, because that is going to help in maximizing your reach. So Ashish, I hope that answers your question. Yeah, so I'll leave it to Lavleen to take a call on that. So if you want to go in that direction, thank you. It should be okay. We'll just discuss that and for sure. Perfect. All right. Any further questions? You just want to finish Siddharth's question? Yeah. Sorry about that. So हाँ, as I was saying कि आप जब Lumen 5 वाला वीडियो आप Canva पे अपलोड भी करते हैं, तो you will get to see each individual slide coming up. वो पूरा stretch हो जाता है ना, in the timeline. तो आप जो लोगो है वो पूरे की पूरे टाइमलाइन पे भी प्लेस कर सकते हैं, so that you don't have to place the logo towards the end. That logo is going to be placed throughout the entire video. Otherwise, आप जो म्यूजिक Lumen 5 वाला है उसको आप मत यूज करिए, राइट? आप सीधा उसको with the logo Instagram पे अपलोड करिए, and then you simply use the music that is going to be coming from Instagram. That is going to be much more better if you're using music from Instagram as opposed to Lumen 5 का music. So don't worry about Lumen 5 music. आप उसको म्यूट भी कर देते हैं, ऑफ भी कर देते हैं, that's fine. वीडियो एंटिटी आपकी बन गई, कैनवा से आपने लोगो डाल दिया, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दीजिए म्यूजिक के साथ. Okay. So I have another question. Yes. It is something on the same pattern. Let's suppose that we do not go in for the collaboration because I use my logo over there and now THT has another logo. So there may be a conflict when we discuss this further. So the solution to this would be, which I'm thinking right within my mind. I mean, let's say I've posted something on my page and there are 10 posts which are really doing good. And if I rebrand those posts with THT on it, nobody's going to raise a conflict on that because it's done by me. I'm going to use it in THT also. Is that okay? That should be fine. If you're putting up the similar music and then you're adding as a collaborator, no, right? No, not as a collaborator. I'm contradicting my thought that I put forward before. Let's say we do not go ahead with the collaborator thing because I've got a separate brand and THT is another brand. So there will be a confusion, right? But the content that I've posted on my page is good and will make sense in THT also. So I have got the soft copy of it, and if I rebrand that content with THT logo on it, and if I post it on THT, will that be okay? That's going to be okay unless and until somebody from your other community comes up and says कि आपने copyright violate किया, फिर THT बंद ना हो जाए. So that's the only दिक्कत. ठीक है? But he's the one who's running that community, so right? if you're running that and if you're fine with it, this brand, this content is going to be over there. There could be certain problems later on, Ashish, which could be, once यहाँ वाली community भी grow कर रही है, आपकी community भी grow कर रही है, and of the times when they start seeing कि अच्छा ये content तो मैंने वहाँ पर भी देखा था, ये content मैंने यहाँ पर भी देखा था, if it's the same one, then there could be a perception कि अच्छा
it's not original content. It's copy pasted, which we don't want in either. So collaborator add karna, it's still making sense because you know you are working together in that particular kind of an activity. But अगर आपने सिर्फ branding change करके डाल दिया तो वो जैसे बढ़ते जाएंगे लोग तो फिर वहां पे एक perception problem आ सकती है. Yeah. The reason I'm asking is because I just want to avoid duplication of efforts. That's the only question I have. How about sharing, right, Ashish? Like sharing, for example, I shared one of the reels I had made on my personal account also. So So that's like collaboration, no? No, that's different. Okay. So collaboration is something Priyansh can, he's the expert. Over to you, Priyansh. Whenever you put up a content on Instagram in the form of a reel or whatever, वहां पे नीचे एक option आता है add collaborators separately. So then that particular content becomes the property of the main account, let's say THT. And then if you're adding certain collaborators, Hatinder ji or Ashish ji and etc., so they also become the sort of owners of that particular content. So it just goes on to link Instagram in such a way that you have been able to, basically worked on this together and that you're doing things as a team over there. So that would what collaboration mean. Okay. So you're saying that's the better option to do, so there's no issues going ahead. Yeah. Okay. Okay. So we had somebody, maybe they're listening also today, this person, he posted his reel on our thing, but he had used our @THT, but then there was @Amway official. So we're not putting out, as such Amway official on our thing. Plus we cannot use that either. That's a copyright of Amway. So we've just taken that off, and I think he took one of his own off. Yeah. Yeah, so because that could be an issue. Yeah, yeah. So anyhow, that's been removed. All right, cool. So we just have to be mindful of those. I have one other question. Sorry. Right. Go ahead. So, when we go on Instagram, like I've done my draft, I've picked the music, everything. You know how we have hashtags? We have the best hashtags. And do we have something like that where it shows the Instagram music so I know ahead of time what music is on Instagram, or does it have to be only when I'm putting a reel up? So, I mean, a normal Google search can help you identify that, what are the music which are trending at that point of time. Okay. There are certain tools, but I always go by instinct on Instagram itself because wahan pe is the most real-time updated things. Right. So you might spend a little bit of time while you're uploading music on Instagram, but you will be sure that this is something which is being running. And also the best thing that we can do is just look at other reels and jo bhi music acha lagta hai, jahan par bhi zyada reach aa rahi hai, just use that music for I save that on our thing. If we like something. Okay. I just have a quick question regarding the groups that we joined on Facebook. So just like you were saying that the content that we share, is it okay to share the same content on all the groups because they are all health and nutrition based? Yeah, so there could be slight changes. I mean, for example, एक पे आपने post डाला, दूसरे पे आपने polls डाल दिए, तीसरे पे आपने normal image डाल दी. But even if you are going to be sharing the same kind of content across, that's fine. Don't have to worry about it. Because that's simply going to be helping you to get maximum reach. और वहाँ पे कोई as such copyright issue नहीं आता because the content is not when you are posting as a community member posting in that particular group, it does not become a authorized content of that specific group. So they can't do anything कि अगर आपने कहीं और भी post किया है. So continue to do that. Okay, so the post can be common for all the groups. Like in a day, if I'm doing one post, so it can be the same for all the groups. Is that yes. Okay, all right. And there is no way that we can make a system where you post once and it gets posted to all the groups. You can, and okay, you will be able to see that in the last session. Where I will talk about. Okay. All right. You can do that over there. Even when you are posting in your own group or on your page, Facebook does give you a recommendation. Do you want to post it in other groups as well? So you can just one click and you just go ahead. So let's say you're trying to put up something on your own profile, Facebook profile. When you're uploading it,
it will also give you the option add to this group, add to this group, add to that group. Okay, all right. Thank you. I too have one question. Yeah. Yeah, somebody in the waiting room. Oh, all right. Sorry. जैसे हम जब रील पोस्ट कर, जब हम कोई वीडियो, हम मतलब हमें कहा जाता है कि हम एक वीडियो एंड रील दोनों डेली पोस्ट करें, तो वीडियो तो छोटी ही बनाते हैं, सो वो रील की फॉर्म में पोस्ट होती है, और अगर 2 रील्स जाएंगे एक दिन में तो वो आपस में क्लैश करेंगे, आपस में कम्पीट करेंगे. तो I'll tell you one thing, जब आप एक नॉर्मल वीडियो बना रहे हो तो आप उसमें आप रील के मेंटालिटी से वीडियो नहीं बनाओगे, आप उसको एक एज अ जेनेरिक वीडियो डाल रहे हो. एंड ऑल्दो इंस्टाग्राम इज गोइंग टू बी पुटिंग अप इट एज अ रील, ट्राई पोस्टिंग दैट काइंड ऑफ अ कंटेंट अराउंड इन द आफ्टरनून, ठीक है, मॉर्निंग और द आफ्टरनून. बट द सेकंड वीडियो व्हिच विल बी स्पेसिफिकली क्रिएटेड फ्रॉम रील्स पर्सपेक्टिव, वो एंटरटेनिंग फैक्टर एंड ऑल ऑफ दैट, ट्रांजिशंस एक्सेट्रा, उसको ट्राई ऑलवेज पोस्टिंग इन द इवनिंग टाइम 6 to 8. तो there's a big gap as well between each one of them. Plus एक का मकसद ही था एंटरटेन करना और रील की तरीके से जाना, दूसरा का मकसद था अपने वीडियो पे डालना था, लेकिन इंस्टाग्राम बोल रहा तुम कोई भी चीज रील पे डाल दो, राइट? सो आप उसको मॉर्निंग या आफ्टरनून टाइम पे रखो. वो दोनों वैसे रील की तरह ही जाने वाली, क्योंकि वो छोटी ही होंगी, 15 सेकंड से छोटी होंगी, तो वो दोनों रील की तरह ही जाने वाली हैं. वो जाएंगी रील की तरह ही, लेकिन एक जाएगी जिसका कि एक्चुअल इंटेंट ही था कि रील की तरीके से जाए, और दूसरा था कि ठीक है, I just want to be putting up something. And we could do story also, no, Priyash? Yeah, you can put that shorter video as a story as well. और वो क्लैश नहीं करेंगे फिर आपस में, मतलब क्लैश वाला फैक्टर नहीं आएगा. So there's a lot of gap between each one of them, right? और also दूसरी चीज कि आपका जो आप अगर मान लो पहला वाला पोस्ट आप डाल रहे हो एज अ नॉर्मल पोस्ट और वो रील की तरीके से जा रही है, उसके हैशटैग्स विल बी डिफरेंट, उसकी रेलेवेंस विल बी डिफरेंट, उसका नीश विल बी डिफरेंट. एंड ये जो दूसरी प्रॉपर रील आप डाल रहे हो उसके हैशटैग्स अलग हैं, उसका नीश अलग है. तो देयर एनी व्हिच इज competing for different attentions and different way of getting in front of people. Okay. और एक दिन में 2 carousel डाल सकते हैं, मतलब will it affect in any way Instagram algorithm? It's not going to affect. You can definitely do that, but I would suggest एक दिन में carousels 2 डालने से बेहतर है कि आप वैसा वाला content डालो which is much more easier to create and replicate. Carousels में थोड़ा सोच ज्यादा लगना पड़ता है, टाइम ज्यादा जाएगा, so on and so forth. बट वैसे अगर डालेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना उसमें? तो यार जी एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे अभी आपने बताया था कि हमारे को 10-15 कॉमन ग्रुप्स में सभी लोगों ने जाके इन कर लेना है, जो कि हम लोग फाइनल करेंगे, और उन 15 ग्रुप में अगर लेट्स से एक कंटेंट लवलीन ने डाला और सब्सिक्वेंटली कुछ टाइम के बाद में किसी ने ध्यान नहीं दिया, सेम कंटेंट रेप्लिकेट हुआ विद द अदर सम अदर गाय, तो विल इट बी? नो, दैट्स फाइन, चलता है. टू अंडरस्टैंड दैट आजकल एंगेजमेंट के लिए चीजें करी जा रही है, एब्सोल्युटली फाइन. अब आप देखो एक ही न्यूज आइटम अलग अलग ग्रुप्स में सेम ही तरीके से डाला हुआ होता है, राइट? सो देयर इज नो इशू अबाउट इट. ऑलराइट, ओके, कूल. सो आई one more question, just one more question. Taking almost, yeah. Just one more question. कि अगर हम एक दिन 2 पोस्ट डाल रहे हैं, अगले दिन 3 पोस्ट डाल रहे हैं, तो अगर वो अल्टरनेट करके डाल रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत आएगी इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में? अगर आप एक रूटीन बना के चल रहे हो कि एक दिन 2 डाल रहा हूँ, एक दिन 3 डाल रहा हूँ, एंड देन दैट इज गोइंग एज अ कंसिस्टेंट रूटीन, देन इट इज फाइन. बट अगर एक दिन 2 डाल रहे हो, अगले दिन 3 डाल रहे हो, फिर अगले दिन भूल गए या नहीं किया, या 1 आ गया या 4 चले गए, तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को सिस्टम चाहिए. वो सिस्टम कंसिस्टेंसी अगर उसको मिलती है, देन दैट्स नो इशू. दैट कंसिस्टेंसी नीड्स टू बी मेंटेन्ड. इवन अगर आप महीने में एक पोस्ट एक दिन डाल रहे हो, तो हर महीने वो एक पोस्ट उस दिन जाना चाहिए. कंसिस्टेंसी आनी चाहिए. All right. Perfect. Good stuff. So the final new topics for us to say would be WhatsApp, and WhatsApp, maybe all of us, we are using personal WhatsApp, but personal WhatsApp की 2-3 चीजें हैं कमियां, and that कमियां is कि unless and until किसी का नंबर आपके पास सेव ना हो तो you cannot message. आप उसको एक एज अ कम्युनिटी शेयर करना चाहें तो वहां पे डिफिकल्टी आ जाती है. आप अगर अपने प्रोडक्ट्स दिखाना चाहें वहां पे दिक्कत आ जाती है. आप अगर फेसबुक पेज के साथ आप कनेक्ट करना चाहें नॉर्मल व्हाट्सएप को, तो कनेक्ट तो हो जाता है, बट यू विल नॉट बी एबल टू यूज सर्टेन गुड फीचर्स ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस सच एज क्विक रिप्लाईज, कि आपने फटाफट एक ग्रीटिंग दे दी, जैसे मैसेंजर ऑटोमेशन था, हाय किसी ने लिखा तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाए, राइट? सो
And any which ways, when we are forming a community and when we are running a business, तो personal WhatsApp को हम अलग ही रखें. ठीक, so in that regards, what we would want is every business, even for this particular community, we would want to be having specific WhatsApp business account. Now, generally, एक मोबाइल फोन पे आप एक नॉर्मल पर्सनल व्हाट्सएप भी चला सकते हैं और एक व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, बिजनेस व्हाट्सएप चला सकते हैं, राइट, एज लॉन्ग एज इन दोनों का नंबर अलग हो, राइट. अगर आप मान लीजिए आप अभी एक पर्सनल व्हाट्सएप चला रहे हैं विद अ स्पेसिफिक नंबर एंड देन यू आर डाउनलोडिंग व्हाट्सएप बिजनेस और आपके पास कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो होगा क्या, व्हाट्सएप विल टेक योर एग्जिस्टिंग पर्सनल नंबर और उसी पे ही व्हाट्सएप अकाउंट चला देगा, WhatsApp business चला देगा. So all of your personal chats will also get migrated to WhatsApp. So what we suggest is, rather than doing that, get a separate number which could be your official business number, and that should be created with a WhatsApp business account, right? So yeah. So Priyash, I've already done. पहले तो आपने ये बताया नहीं. Anyways, I've already done my India number as our business number. Though I use that phone for personal use when I'm in India. So I will suggest But that you can leave convert that. it back. आप जो existing Indian number है, which has been converted into WhatsApp business, you delete that WhatsApp business account and you know वो जो आपका you can convert that WhatsApp business account into a personal one, right? Back to personal हो जाएगा, वो number आपके personal WhatsApp पे चला जाएगा. Then and get another SIM. Get another SIM, another number, और उस another SIM, another number पे we would set up our WhatsApp business number. Okay. So what I understand from you is that once I get that other number on my one phone, I can have my personal on one phone and my business on another. You can so have because they're two separate apps. They are two separate apps. So the personal WhatsApp looks like this, right? When you look it from the Play Store. The other one is with the B. That comes with the B. So both of these apps, ये दोनों apps आपके फोन में एक साथ simultaneously चल सकते हैं, provided इसका number 1 हो, इसका number 2 हो, right? अगर आप यही same ही number use कर रहे हैं, तो फिर you'll still be having 2 apps on your mobile phone, but WhatsApp personal वाला will show you nothing. It's not खत्म gonna हो work. गया, I did right? that already. That number will get transferred to the business one. So once you do go ahead and create a WhatsApp account, there are certain basic hygiene, just like Instagram account mein, Facebook page mein, whatever hygiene that we were maintaining, same kind of things are also there in a particular WhatsApp business account. Now, if you look at, abhi anybody has a WhatsApp business account, by the way, apart from you, lovely ma'am? Okay. So जब आप WhatsApp business account डाउनलोड कर लेते हैं, उसे एक्टिवेट कर लेते हैं, actually it will only be required by one individual in the entire team, which is you. And but in any case, आगे चल के अगर कोई WhatsApp business account भी use करना चाह रहा है, that would be a good knowledge for them as well. In your settings, in your WhatsApp business settings, you will find a lot of options. Business tools है, accounts है, chats है, notifications है. These account chats, etc. you will also find in your regular WhatsApp, but specifically business tools is something that is coming up only for WhatsApp business account. The moment you click on business tools, you will be getting the following options. Pehla, business profile, then you have catalog, then you have away message. For example, you are not working or not there to respond to people after 6 p.m. And if somebody messages you around that point of time, automatically away message chala jai. Thank you for reaching out to us. We will get back to you. Then it can also have a greeting message. Somebody messages you for the very first time and automatically, hi, such and such, welcome to our community. Thanks for reaching out to us. Just say messenger automation mein we have seen. Then you can have quick replies. Somebody's asking for example, what is this community all about? You already have a pre-saved message, which you can send across instantly. And then you can also create multiple labels. For example, आपके पास 100 लोग आ गए within that WhatsApp business account. You can divide them. 20 are for, let's say, fitness, other 20 are for yoga, the third 20 are for diets. You can label them. And this labeling will help you segment
your audience for specific messages. जितने भी लोग labeled होंगे, let's say for exercises, you will only send them messages related to exercises. जितने लोग interested होंगे in recipes, you will keep sending them information about recipes, right? So these kind of messaging tools are not available in your personal account. So ये specifically WhatsApp business account के features हैं. जब आप business profile पे जाओगे, see the basic information that you get to add. For example, what is this business all about? In this example, we said graffiti, street art, murals, wall art. In your case, it would be fitness, health, fitness, mental health, detox, recipes, that fitness engagement community, something of that sort, right? That would be your brief bio, just like we would have put up a brief bio on our Instagram. Then you have the industry vertical. See over here, it is selected as arts and entertainment. In your case, it would be fitness. Now, when is this business open for any kind of communication? Now, of course, we are talking more from a standard traditional business ki uski working hours kab hai. In your case, you could put down ki, somebody from our team is only going to be able to reply on Monday to Saturday between this time to this time, right? So you can put that over there, or you can just have 24 hours as well. Then the contact information, email ID, of course, phone number to hai hi. This could be your community phone number. You could create a community email ID so that if people would want to be reaching out to you, and yahan pe jaise website ka link aa raha hai, this could be a region for that Google form. So that form will also be placed within your WhatsApp business. And ye jo logo dikh raha hai, this of course will be your THT, which is the profile image, as you can see. Okay, so far, are we in sync? Ma'am, you have a question? Shikha ma'am? Yeah. थैंक यू. मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमने अपने इंस्टा पर अभी मोबाइल नंबर है, सपोज मैं बिजनेस के लिए नंबर चेंज करती हूँ, कोई नया नंबर लेती हूँ, तो मुझे वो इंस्टाग्राम पर भी चेंज करना होगा? करना चाहिए आपको. I mean, if that becomes your consistent phone number. मेरे फॉलोअर्स और उन सब चीजों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो इंस्टा का अकाउंट है. Exactly. और अगर एक ही फोन में डुअल सिम चला रहे हैं और मैं एक नंबर से जो मेरा बिजनेस अकाउंट है कुछ शेयर कर रही हूँ, या मैं अपने पर्सनल से अपनी पर्सनल फोटोग्राफ से शेयर कर रही हूँ, तो क्या वो मेरे बिजनेस अकाउंट वालों को भी शो होंगी? नहीं, तभी तो हम दो अलग अलग एप्लीकेशन है. एक व्हाट्सएप पर्सनल मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेंजर है, उसकी चीजें उसी में रहेंगी, और व्हाट्सएप बिजनेस है, उसकी चीजें उसी में रहेंगी. तभी मैं इसलिए भी मैंने ये कहा था कि आप एक ही नंबर मत यूज करिए, बिकॉज आप पर्सनल व्हाट्सएप पे अपनी पर्सनल स्टोरीज डालेंगे या फिर चीजें डालेंगे, राइट? एंड वो बिजनेस अकाउंट में भी दिखेंगे टू दोस पीपल जिनको आप वन ऑन वन नहीं जानते. तो बिजनेस का नंबर ही अलग होना चाहिए, एप्लीकेशन को ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहना चाहिए. वजह से लास्ट 1 साल से मैंने फैमिली की कुछ चीजें व्हाट्सएप पे नहीं शेयर की, क्योंकि वो लगता है ना कि काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते. सो दैट मीन्स हम डुअल सिम चला सकते हैं. ओके, थैंक यू. प्रिया जी, एक क्वेश्चन है. बेसिकली मैं कई बार क्या होता है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ना कुछ मतलब बल्क मास मैसेजेस आते हैं. सो आई थिंक दी पीपल आर हैविंग दी मास प्रमोशन, जिसमें कुछ अब मुझे पता ही नहीं मेरा नंबर उनके पास कैसे गया है. तो क्या हम ये बात कर रहे हैं कि बेसिस ऑन दैट वी कैन आल्सो शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू द मल्टीपल पीपल्स आवर TST इंफॉर्मेशन बाय दिस बिजनेस ग्रुप? एग्जैक्टली, राइट. बिकॉज स्पैम नहीं करना है. व्हाट्सएप ये कतई नहीं कहता कि आप दिन के 1000 मैसेजेस भेजें, और अगर आपको दिन के 1000, 1500, 2000 मैसेजेस भेजने तो उसके लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट व्हाट्सएप से एक API खरीदनी पड़ती है. विल नॉट इवन गेट इनटू दैट. बट जैसे आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रहे हैं, वो नंबर जो आपके फोन पे पहले से सेव नहीं है, अगर आप देखेंगे पर्सनल व्हाट्सएप पर, अगर आप 200-250 से ज्यादा लोगों को मैसेज करते हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों को जिनके पास आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन पहले से नहीं थी, तो व्हाट्सएप पर्सनल अकाउंट भी आपको बैन करने की कोशिश कर सकता है. लेकिन जो व्हाट्सएप बिजनेस है उसमें यहाँ पे थोड़ी लैक्सिटी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसे मिसयूज करना है. व्हाट्सएप स्पैमिंग को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है. बट पहला तो जैसे आपने बोला पर्सनल में मेरे पास 256 का होता है जो काउंट जो हम लोग शेयर कर सकते हैं.
ग्रुप। हाँ, ऐसा होता है कि मेरे कॉन्टेक्ट्स में लेट्स से 1000 नंबर्स हैं और मैं कोई मैसेज शेयर करना चाहता हूँ, कोई ग्रीटिंग और समथिंग, वो सभी को चला जाए। जी बिल्कुल, आप वही आएंगे हम होता है। कम्युनिटी पे। अगर आप देखेंगे अभी अगर आप अपना व्हाट्सएप खोलें, इफ ईच वन ऑफ यू कैन ओपन इट अप, सो यू विल सी ऑन टॉप आपके व्हाट्सएप पर ही, जहाँ पे कॉल्स, स्टेटस, चैट्स और चैट्स के लेफ्ट हैंड साइड, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी दैट, एक छोटे से 3 ह्यूमन आइकॉन्स हैं। अगर आप क्या देखें है? चैट्स के लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा है? So that is the new feature that WhatsApp has brought up for both business accounts as well as for personal accounts. इसे कहते हैं WhatsApp community. मेरे को नहीं मिल रहा है, कहाँ पे बता रहे हैं आप? Definitely होगा। अगर आपका मोबाइल ऐप अपडेटेड नहीं है तो फिर आप उसे दोबारा से डाउनलोड कर ले। WhatsApp पे जाएं और आपको चैट्स दिख रही है ना, ऊपर चैट्स लिखा हुआ है, स्टेटस लिखा है, कॉल्स उसके साथ ही है, उसके साथ ही है। चैट्स के एकदम लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सा आइकॉन है 3 आदमियों का, 3 छोटे छोटे। कम्युनिटी के लिए जो लिखा हुआ है, कम्युनिटी। Exactly. तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आप न्यू कम्युनिटी बना सकते हैं। तो न्यू कम्युनिटी में आप अपने स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो 1000 हैं, इसकी लिमिट 1000 कॉन्टैक्ट्स की ही है, तो आप एक कम्युनिटी बना लें 1000 लोगों की, दूसरी कम्युनिटी बना लें 1000 लोगों की, तीसरी कम्युनिटी बना लें 1000 लोगों की, राइट? मैं मिस कर गया, सॉरी कि आप मुझे बताया मैं हेलो, ये मिस्टर No, प्रयास, we cannot status- hear you. हेलो, कैन यू? the voice is क्या breaking. दीदी? मिस्टर प्रयास, कैन यू एलेबरेट Hello. फेसबुक एंड इंस्टा लिंक जो बिजनेस व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप बिजनेस पे? I'll come to that. I'll come to that. अभी काफी चीज अभी इससे है। So sir, I'll get back to you in just a bit. आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। नहीं, are you able to listen me? Hello, can you? Yes, tell Hello, me. अभी am I okay now? Audible now? Yeah. Okay. So मैं ये पूछ रहा था कि let's say I go on my WhatsApp number, I mean WhatsApp, so there are 3 options: chat, status and calls. इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आप बता रहे हैं? And there are Chats के few लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, people are also around me. चैट्स के एकदम कोने में एक छोटा लेफ्ट सा में है, ठीक है। Priyash, it may be different on different There is an phones. option new community. हाँ, So it is there, didn't got it, no? तो वहां से आप अपनी community बना सकते हैं। Okay, New community. perfect, right? So is this only for people who like a broadcast, that people who have my number? This we're talking about a personal WhatsApp, right? Yeah, this we're talking about personal WhatsApp, and you might already be a part of multiple groups on your personal WhatsApp, right? So you can combine those different groups into a single communication channel. Because एक ग्रुप के अंदर आपके पास 256 लोगों ही डाल सकते हो, बट अगर आपके पास 4 ग्रुप्स हैं, उन चारों ग्रुप के लोगों को आपको एक साथ मैसेज करना है in such a way that you are the only one sending messages or value from one side, rather than all 1000 start talking to each other. Right? And Plus, then this it will be WhatsApp one by community one, will right? also add multiple different managers as well. That एक लवलीन मैम हो गए इसके एडमिन, फिर एक मनोज सर हो गए इसके एडमिन, फिर एक चेतन सर हो गए इसके एडमिन. So multiple admins can also work on this community simultaneously. प्रयास सर, ये जो कम्युनिटी हम आपने बताई, ये हम क्या अपने ओल्ड नंबर पे बना सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है, या वो फिर आपका new? पर्सनल नंबर होगा एंड दैट वुड बी योर पर्सनल चॉइस. आई वुड सजेस्ट कि आप बनाना चाहें डेफिनेटली बना लें, बट आइडियली इट्स बेटर कि आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के साथ बनाएं. ओके, तो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के लिए फिर हमें वो तो फिर प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा ना? जी. ओके, ये आपने जो चैट के बगल में जो बताया था, इसमें साइन है काफी सारे पीपल का, लाइक यही है ना उसमें? हाँ. मेरा एक प्रयास जी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैन यू हियर मी? हेलो, मैं ये पूछ रहा था कि अगर मैंने जैसे ब्रॉडकास्ट में हम लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं तो वो मैसेज इंडिविजुअल बंदे को जाता है, अगर मैंने न्यू कम्युनिटी क्रिएट किया तो दैट मैसेज विल आल्सो गो टू द इंडिविजुअल, नॉट द कंप्लीट विल ग्रुप. गो इनटू द कम्युनिटी. इसमें कम्युनिटी पे जाएगा. इसमें कम्युनिटी पे जाएगा, बट से जो आप वो बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल लोगों को जाना चाहिए, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती है अलग से. तो वो जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती है, जो न्यू कम्युनिटी अगर मैं बात करूंगा वो अलग चीज होगा जो भी आपने बताया, और ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा तो वो लिमिटेशन होगा 256 का.
Exactly. और यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा कम्युनिटी, then we can have the moderator or as the admin people, 3-4 number of people so who can manage You this. can always manage together. वो आप 4-5 जन एक साथ एक कम्युनिटी मैनेज करेंगे, जैसे फेसबुक की कम्युनिटी आप पेज मैनेज करें. So उस पे दोबारा आएंगे. There are certain community guidelines on WhatsApp that we'll be talking about today. But एक बार ये जो setup अगर आप देखें तो पहली चीज तो होगी WhatsApp business पे आपने information डाल. Next thing, and you can tell me, Lovely ma'am, if this would be relevant for you or not, but we usually encourage people to have that, which is adding catalogs. Now these catalogs क्या है basically, आप अपने individual products, whatever products that you want to be showcasing, you can add their images, their name, price if you want to show, वो किस बारे में है, कहाँ से वो खरीद सकते हैं. You can do that, right? Provided it's something that you would want to be doing on your WhatsApp business account. If not, then you can add the catalogs in a service map. For example, one catalog or one item is basically exercises. The other item is recipes. The third item is some XYZ other counseling, maybe one-on-one mentoring. So उसमें क्या होगा? People, when they come to your particular WhatsApp business account, if you do not want to showcase products, they'll still be able to see what all things you actually care for as a business or as a community, right? So everything will be visible to them. And if they select any one, agar product hai, for example, product ko click kiya, so you will get a message that such and such person is interested in that product. Similarly, if they click on one-on-one mentorship, for example, you will get a message that this person with this number is interested in a one-on-one mentorship. So ये जो catalog area है, even if you're not utilizing it for D2C products or actual products, you should still utilize it for your service to say. Yeah. Right? Perfect. So that's another option, which is of course not going to be available or visible in your personal account. ये catalog जो है ये केवल WhatsApp business पर ही आता है. फिर तीसरी चीज जो केवल WhatsApp business पे आता है, as we said, is the quick replies. Right now, what would this mean? For example, somebody is messaging you for the first time and they say, what is this community all about? Let's say they type, what is this community? Now, rather than you typing that entire message ki hum ye karte hain, wo karte hain, etc., blah, 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 you can save them as your responses. Then there could be another thing. How can we help you? How can you help you in your fitness journey? How can we help you in your weight loss journey? How can we help you in your recipe journey? How can we help you in detox journey? Ye jitne bhi problems that you are solving through your community, have them saved as quick replies. So that all you will have to do is just select that message and gone. Will be seen to individual people. Make sense? So ये क्या प्रयास सर, ये जो आपने कम्युनिटी बताया है, इसमें कम्युनिटी में क्या हमें एक ही बनानी है या फिर जैसे आप बता रहे हो कि फिटनेस की अलग है, लाइक किड्स के ऊपर अलग कम्युनिटी बना सकते हैं, और तो एक ही कम्युनिटी बनानी है या डिफरेंट बनाए हम? अगर आप ऐसा बाइफरकेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज है, बिकॉज किड्स की कम्युनिटी है तो आप उसमें किड्स वाला ओरिएंटेड कंटेंट ही डालेंगे, वो निकले रहने में. हेल्थ के ऊपर अलग है क्योंकि उसमें जो जिसको पिच करेगा वो उसी कम्युनिटी में जाएगा. उसी कम्युनिटी का पार्ट. एग्जैक्टली. लाइक राइट. सो अगर आप लोग इंडिविजुअली भी अलग अलग कम्युनिटीज बना रहे हैं इन योर पर्सनल अकाउंट एज वेल, इवन लेट्स से यू आर नॉट यूटिलाइजिंग व्हाट्सएप बिजनेस, आप इंडिविजुअली भी अलग अलग कम्युनिटीज बना रहे हैं, व्हाट आई वुड सजेस्ट, लेट्स से शालिनी मैम सेज दैट शी इज पिचिंग अ किड्स प्रोडक्ट, तो वो किड्स वाली कम्युनिटी बनाए एंड उसमें लवलीन मैम को या somebody else from your team as well, उनको भी as a moderator or as an admin डाल दें. Right, so still there will be a unified connection happening. That means, Loveleen ma'am, your phone will get inundated with a lot of communities and lot of messages. So I think that's something that you'll have to deal with, but that is something that you guys all can do. Right, so ये तीन चीजें सेटअप आपको करनी है. Your business details on the WhatsApp business app, ये personal app पे नहीं होगा, catalog business app पे होगा, quick replies business app पे होगा. जो कम्युनिटी है वो आप पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट पे भी बना सकते हैं एंड वो बिजनेस अकाउंट पे भी बना सकते हैं. ओके. The other thing which we have already done, if you remember, जब first time when we were creating a Facebook page, I said please link your WhatsApp number with your page.
right? So this is something that you've already done. Yahan par bhi, rather than connecting your personal number, link it with your business number, so that it becomes easy for people to connect with you. और जैसे ही कोई call to action WhatsApp पे click करेगा, तो उसके पास वो automatic greeting message चला जाएगा, automatically कुछ quick replies चले जाएंगे. So that just makes things much more easier, right? So ये तो I hope we have already done it, right? Apart from this, if you remember when we were posting things on Facebook, I had shown you that whenever you're uploading a post, you can add a call to action of WhatsApp. How many of you guys remember? Let me just reiterate that once again. Yeah, I think we haven't done that yet, though my number has been created and it's been added. Right, so let me just show you one quick example. What am I talking about? And you don't need to do this activity for each and every post, but jahan par bhi aap call to action de rahe hain, for example, join us for this new incentive, yeah, join us for new exercise course or whatever that you're giving. So you would want to be giving an opportunity to people to go ahead and message you on WhatsApp in some way or the other. Right. So, for example, if I go on to this particular page, let me just go on to a different account. This is not working. Achalo, it's working. Is it only for me? Just hang ho gaya? Are you guys still able to hear me, right? Oh. Right. See, as a social media marketer, I have to have so many Facebook personal profiles to manage so many pages. I have lost the count ki mere paas kitni profiles hain. But nevertheless, so let's say this was the page, and I would want to be adding a particular content over here in the form of just making WhatsApp call to action button bhi chahe. So simply you're adding this photo or video, right? And if you notice here, normal post dala apne XYZ, image dal di, photo dal di, but here this more has a call to action button of get WhatsApp messages. So once in a week or twice in a week, go ahead and put up certain content on your Facebook page in such a way, just make the call to action is getting people message you on WhatsApp, because the moment they click on it, you will instantly find that, acha, I am interested in this. I am interested. I think we lost him for a bit. He'll be back. So I think जो मुझे पता चला है, I should get a different number and then create that into a business account, correct? Yeah, because I've already switched mine, which is also okay because that's like my India number. I don't have to do my personal. The only thing is जब मैं वो phone India में use करूँगी, तो वो personal भी calls आएंगे, and that's totally okay. I'm just gonna leave that. Yeah. If anything, जैसे मैम 1 मिनट, जैसे कि एक ड्यूअल सिम है एक फोन में, तो एक तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर हो गया, दैट इज यूज, एंड यदि अनदर नंबर, जो अदर नंबर उसको हमने व्हाट्सएप नहीं क्रिएट किया है, तो क्या वहां पर व्हाट्सएप, वो बिजनेस व्हाट्सएप नंबर क्रिएट करके यूज कर सकते हैं? या एब्सोल्युटली, यस, ऐसा है। यदि आपके पास ड्यूअल सिम मोबाइल है, राइट, तो उसमें एक नंबर पे आप पर्सनल व्हाट्सएप चला सकते हैं, दूसरे पे आप बिजनेस। उस पर जो और जैसे फोन कॉल और कुछ, वो तो इंटरफेयर तो नहीं करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉल्स वगैरह आज इट इज नॉर्मल नहीं, two separate accounts. ओके, बट अकाउंट्स विल बी सेपरेट फॉर द, हाँ, बिजनेस अकाउंट सेपरेट हो जाएगा, वो बिजनेस व्हाट्सएप सेपरेट हो जाएगी, वो दोनों अलग। दोनों अलग। थैंक यू सर, थैंक यू। यस प्रियाश, Coming back to here, what I was saying is कि वीक में एक दो बार ये मैनुअली करना पड़ेगा, because this is not something that you can schedule जिसमें call to action WhatsApp आए,
But if it's possible, week में once or twice you add certain post on your Facebook page जहाँ पे the call to action is given as WhatsApp, so that people can click on it and they immediately become a part of your WhatsApp community on your business channel, right? So this is something that you should be doing as often as possible, and ये तभी फायदा है जब आपने अपना business account already Facebook page के साथ link कर लिया, which you guys have done. Now coming to how do we share content on WhatsApp? What is the right way of doing it so that you get traction, so that जो लोग हैं वो भी समझ पाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? See, the problem that has become with us कि हम we've become a forwarding generation कि जो आया forward कर दिया, या फिर एक लंबा चौड़ा मैसेज डाल रहे हैं, बहुत छोटा मैसेज डाल रहे हैं. People are sick of it, right? And they don't find any value. So there is a way to push content on your WhatsApp groups or communities as well. And I'm going to be talking about that one by one. So first and foremost, if you are writing a post, right, you see, agar aap ye ise dekhoge on WhatsApp, this will be very readable, right? See, we are making use of certain pins. If this is an important message, then you are giving proper spelling, make use of italics or bold wherever required, right? अगर आपको कुछ specific register ना हो या specific call to action देना है, दीजिए. When you are mentioning date, you see, this just makes your particular message very visual in a very dull environment. WhatsApp पे जहाँ पे इतने सारे भर के messages आते हैं, which is just too much of text, even if you have a big message that you are sharing with your target audience, that needs to be coming up in a systematic way. And I would suggest कि ये जो format, it does not need to be this lengthy, but having these emoticons over here, bold कहीं पे use कर लिया, कहीं पे italics आ गया, and every other line we are using some or the other emoticon, because that just makes your message more appealing. And even at a glance, when you are glancing that message, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है. Even if I don't read this entire message, I'll be interested. अच्छा कोई date दिया, time दिया, platform zoom दिया, अच्छा किस बारे के लिए दिया है, then I'll go ahead and read it. So when you share information, critical information for an event, for an activity, have it in this format. दूसरी important चीज, what we normally do, and this is something that you would have noticed a lot of time, कि आप एक image upload कर रहे हैं. Let's say you are sharing an image on the group, and you see that you get an option, write something about that image itself. See that when you're going to be uploading, आप कोई भी image WhatsApp पे upload करने की कोशिश करिए, तो वहां पे immediately नीचे एक text box भी आ जाता है जहां पे आप बोलते हैं इस image के बारे में. That is fine, लेकिन उसके साथ एक problem है. Problem क्या है? अगर आप वही image और उसी text के साथ उसे आगे share करना चाहते हैं in other groups, in other community, तो खाली image share हो जाएगी और ये text share नहीं हो पाएगा. I think that's changed now, Priyash. Now it's both caption and text, that image that gets shared. It just changed recently. Yes, recently it has changed. अभी अगर आप करोगे दोनों चीजें share होती हैं, और we cannot even separate them now, I think. No, only we have to select. फॉरवर्ड You have करने to पे नहीं select the होगा, text and then शेयर में जा करके तब होगा. Exactly. तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप एक इमेज को पहले शेयर करें और उसके साथ नीचे separately you add the text that what is this image all about. That way it will be much more easier for you to circulate it across different communities and different groups as well. Right? तो ये दूसरी important चीज है, and there will be plenty. For example, आपने Instagram का ही कोई post है, आपको आपने वही का वही ग्राफिक लिया, WhatsApp पे डाला और उसका जो कैप्शन था वो अलग आपने डाल दिया. Now this can be shared. This can be shared to different groups or different communities wherever you want to be doing it. So it becomes much more of a shareable content for other people as well if they want to be forwarding. Then just like Instagram and Facebook, जो भी अगर आप images डाल रहे हैं, just have them either in 1:1 and the other one would be 9:16. Why? Because this is also mobile optimized. आप 4:5 या कोई दूसरा करेंगे, and when you click on that image or when you look at that message, right, तो वो images ढंग से उभर के नहीं आते and you're not able to understand the communication. So even for WhatsApp, when you're adding any images, वही Instagram वाली guidelines 1:1 या फिर 4:5 या फिर even better 9:16 images or videos. Why? Because ये तो पूरा का पूरा message it will go up like a full screen
message, so people will not be having any other chance than to concentrate कि आपने भेजा क्या है. Specifically when it's a video, once it gets downloaded, it becomes much more easier to consume. So again, blindly हमें कोई चीज नहीं डालनी है. There has to be a logic and a science behind it as well. 1:1 easy to share हो जाती है, right? Easy to create हो जाती है. Videos आप create करने हैं तो portrait mode में या 9:16 पे बनाए. Horizontal वाले videos नहीं बनाए तो बेहतर, क्योंकि even when you play that horizontal 16:9 videos तो एक छोटा सा खुलता है या कहीं जाता है. बट इसमें क्या होता है, आप क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे तो पूरी स्क्रीन खुल जाती है उस वीडियो की when it starts playing. Right? So the attention cannot be left, right, center. The attention will be on you itself. So that is another very important aspect when it comes to sharing of content. Then stories, just the way that you're putting up stories on Instagram, on Facebook, WhatsApp business पर भी stories डालते रहें, because you will always have more number of contacts in your phone book, at least for now, as compared to the total number of followers that you're having in Instagram and Facebook right now. हर किसी के पास, मेरे फोन में 2000 contacts है, right? So everybody, I'm guessing, will have 2000, 3000 contacts at least. इतने सालों से we don't change our numbers for years and years now. So we have a combination of so many contacts. And if it is feasible for you, आप stories में डाल सकें, WhatsApp stories डाल सकें तो डालें. Business account में तो definitely डालनी है. And जो आपका Google Form का link है, that can always be shared, right? Create a series. For example, आपने एक fact डाला as one story part, then आपने उसका result डाला, for example, and the third one would be call to action. अगर आपको इस जिंदगी से ये result पाना है तो join करें, click the link here. So story number 1, people will tap on it, they will go on to story number 2, they will again tap on it, they will go to the story number 3, and story number 3 will have this message with a link which could be your Google Form link, which people will click on and then will become a part of your community. Are we following? ये Yes. जो आपने बताया, ये बेसिकली आप मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे करना है या फिर बिजनेस अकाउंट वाले नंबर पे? प्राइमरीली तो हम बिजनेस अकाउंट में करना चाहेंगे, बट जिस तरीके से हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी टीएचटी का कंटेंट शेयर कर रहे हैं या टीएचटी का जो विजन है शेयर कर रहे हैं, इफ यू वांट यू कैन डू द सेम फॉर योर पर्सनल अकाउंट एज वेल, राइट? प्रोवाइडेड देयर इज कंफर्ट लेवल and there is something that ये आप करना चाहें on WhatsApp, because I know that a lot of people are, let's say, doing other jobs as well, या different चीजों में होते हैं, and they want to keep things separate. So if you are in that category, that's fine. But if you can openly start sharing this details, and I think it should be still fine, because you might not share join वाला link, right? You might not share कि आप community join करें, but you may put up the link of your Instagram handle. Follow this Instagram for more such great information. तो यहाँ पे आपके Instagram का link आ सकता है, which when people click will go on to that Instagram channel of PhD, and वहाँ पे they can fill up that form and become a part of your community. Okay? ये जो स्टोरीज हैं मुझे व्हाट्सएप पे बनानी है, हाउ डू वी क्रिएट दिस? जैसे अभी आपने एग्जांपल कोट किया ना, यूज लिंक इन द स्टोरी, तो ये जो ये इट इज अदर देन द इंस्टाग्राम एंड तो WhatsApp पे जो स्टेटस वाला ऑप्शन आता है ना बीच में, चैट्स और कॉल्स के बीच में एक स्टेटस वाला ऑप्शन है. So that status option is a story option. अगर आप क्लिक करेंगे status updates, then आप कोई भी आप इमेज डालना चाहें इमेज डाल दीजिए, कुछ लिखना चाहें आप लिख लीजिए, right? You will get all of those options. वीडियो अपलोड करना चाहें वीडियो अपलोड कर लीजिए. or not for a long time, for some time only, I believe it is for 24 hours or something. Same. So Instagram की स्टोरीज भी for 24 hours रहती है, Facebook की स्टोरीज भी 24 hours रहती है, WhatsApp की स्टोरीज भी 24 hours ही रहती है. सिर्फ Instagram में एक फर्क ये है कि आप उसको स्टोरी को हाईलाइट की तरीके से भी सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर. तो आपका मतलब है उसी में ही मैं जब स्टोरी प्लेस कर रहा हूँ तो वी कैन गिव दी आइदर दी बायो और या फिर बाकी चीजों का काइंड ऑफ कॉल टू एक्शन और समराइज सर्विस हो सकते हैं. It is on to our personal account wherein we can invite people for our TST if we want to know more about join our community life. हाँ,
हाँ, that's absolutely perfect. So आप जिस point of direction में जा रहे हैं, right? Plus मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप existing multiple groups में हैं, which are similar in lines with let's say आपको लगता है कि मैं बहुत अलग अलग ग्रुप्स में हूँ और उन ग्रुप्स को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ, तो आप कम्युनिटी बना लीजिए, राइट? मैं पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ. अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नहीं चला सकते या फिर अपनी पीएचडी का तो एक ही व्हाट्सएप अकाउंट होगा, सो फ्रॉम पर्सनल व्हाट्सएप एज वेल. एक हो गई कि आप रेगुलर स्टोरीज डालें, दूसरा हो गया कि आपने अलग अलग ग्रुप्स को कंबाइन करके एक कम्युनिटी बना ली, राइट? या एक नई कम्युनिटी बना ली बाय इनवाइटिंग डिफरेंट पीपल. और दोनों जगह से आप लोगों को ट्रैफिक कहाँ भेजेंगे? इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जो हमारा टीएसटी का पीएचडी. मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा, मे बी आई मिस्ड आउट. आपने जैसे बोला कि मेरे मेरे व्हाट्सएप पे लेट्स से 4000 नंबर हैं अभी मेरे अपने पर्सनल अकाउंट पे. नाउ आई वांटेड देम टू मूव इनटू माय टीएसटी पेज, टीएसटी काइंड ऑफ जो हैंडल है वहां पे मैं लेके जाना चाहता हूँ. तो देर अभी मैंने जैसे कुछ स्टोरी अपने पर्सनल अकाउंट पे डाला तो वहां मैंने उसको रूट कर दिया, इफ यू वांट टू मोर गुड इन्फॉर्मेशन काइंडली फॉलो दिस लिंक एंड देन टू क्लिक इनटू बायो. तो वहां से ट्रैफिक डाइवर्ट होगा जो मेरे पसंद है. दूसरा, मैं अगर आपने अभी एक बात बोला कि कम्युनिटी में हम वो क्या है कि 4 ग्रुप्स को असेंबल करके कम्युनिटी बना सकते हैं, हाउ इज दैट? अभी अगर आप कम्युनिटी पे जाइए, ऑन व्हाट्सएप आप कम्युनिटी पे जाइए एंड क्लिक ऑन क्रिएट न्यू कम्युनिटी, तो वो आपको बोलेगा या तो आप एक नया ग्रुप बनाए, राइट? आप एक नया ग्रुप बनाए, वहां पर आपने 256 लोगों को डाला, फिर आपने एक दूसरा ग्रुप बनाया, 256 ग्रुप को डाला, लोगों को डाला. यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं. जैसे आपने बोला स्टार्ट योर कम्युनिटी, ऑर्गेनाइज रिलेटेड ग्रुप, कीप चैट फोकस्ड एंड रिसर्च रीच एवरीवन एट वंस. 3 ऑप्शन आ रहे हैं. तो आप करिए न्यू कम्युनिटी. न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा. स्टार्ट, मैंने न्यू कम्युनिटी किया. न्यू कम्युनिटी के बाद ही मुझे अच्छा ओके नाउ दिस इज कम्युनिटी नेम, कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन. कम्युनिटी नेम, कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन जब आप वो डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि आपके जितने भी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं, जो शायद जो आपने बनाए हुए होंगे फॉर योर फ्रेंड्स, फैमिलीज या फिर फॉर स्पेसिफिक एक्शंस, आप उन मल्टीपल ग्रुप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उन अलग अलग ग्रुप्स के, दे विल देन बिकम पार्ट ऑफ वन सिंगल कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप. And that will be in the broadcast mode, or the means everybody may not be having the interconnection contact detail. I mean, everybody will not be able to see, मतलब will not be able to message अगर आप वो उस पर डाल रहे हैं. Only admin can message, only one person. That means only you can message. Can they see the contact detail or not? Can they see the word? Contact number. Yes. Of the individual. Of the individuals. आप जो कम्युनिटी मैनेज कर रहा है उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स उन्हें दिखेंगे, यानी आपके दिख जाएंगे, मेरे दिख जाएंगे, लवलीन मैम के दिख जाएंगे, लेकिन रेस्ट 1200 पार्टिसिपेंट्स कौन है उनको नहीं. मतलब तो एक तरीके से देखा जाए इट्स अ काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट मैसेज जो मैंने कहीं ना कहीं. फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो ग्रुप में अगर आप मेंबर्स पे जाएंगे तो आपको सारा दिख जाएगा, कौन कौन मेंबर है, किसका क्या नंबर है, एक्सेट्रा. लेकिन जब आप कम्युनिटी बनाते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी दिस, यहाँ पर मुझे सिर्फ 3-4 नंबर दिखाई दे रहे हैं जो कि एडमिन है उस कम्युनिटी के, और उस कम्युनिटी में 1214 मेंबर्स हैं. बाकी 1214 लोगों के नंबर्स मुझे नहीं दिखाई. मैं कैन आई टेक एन एग्जांपल? लेट्स से मेरे फोन में देयर आर 5-6 ग्रुप्स जिसमें उन्होंने मुझे ऐड किया एज ए इंडिविजुअल. अब मैं क्या करता हूँ, आई मेक दिस एज ए कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी में जाकर के आई विल क्रिएट, मतलब 4-5 ग्रुप को मैं इकट्ठा करता हूँ. एंड बीइंग ए ग्रुप एडमिन आई विल बी दी पर्सन जिसका नंबर वहाँ शो हो रहा होगा, बट वो चारों में जितने भी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं वो सिंक होकर के एक जगह आ गए. Now, if I send this message on that group, that will be percolated to everybody at a glance. Is it? When you send a message to that community, but then in that case, they won't be able to see the numbers of other people. It's a basically enlarged version of the broadcasting, if I understood correctly. Exactly. ठीक है, understood. और मतलब आप इसका बेसिकली व्हाट्सएप ने इसलिए लागू किया कि आपके पास 4, 5, 6, 7 अलग अलग ग्रुप है. आप हर दिन सुबह एक ग्रुप में गुड मॉर्निंग, फिर दूसरे ग्रुप में गुड मॉर्निंग, फिर चौथे ग्रुप में गुड मॉर्निंग कर रहे हैं. इससे अच्छा कि आप 4-5 ग्रुप को एक साथ कंबाइन कर दीजिए और आपको जितने लोगों को गुड मॉर्निंग करना है आप करते रहिए.
और वो सारे लोग नहीं, एक ग्रुप में होंगे? एक और अच्छी चीज क्या है, जैसे मान लीजिए अभी हमारा बिजनेस में नंबर ऑफ से कस्टमर्स हैं, या हमारे पास हमारा जो जिनके साथ हम डील करते हैं, अब मैं नहीं चाहता कि दे शुड गेट टू नो द नंबर ऑफ ईच इंडिविजुअल। मेरे को उनका मैंने उनको मर्ज करके एक पूल बना दिया। वैसे तो ब्रॉडकास्टिंग में हो जाता है, बट कई बार मैंने देखा है ब्रॉडकास्टिंग में जब फॉरवर्ड करते हैं तो चैलेंजेस आते हैं कुछ। हाँ, ब्रॉडकास्टिंग में लिमिट हो जाती है ना, ये एट अ टाइम यू कैन ओनली ब्रॉडकास्ट अ मैसेज टू अ नंबर ऑफ पीपल। कम्युनिटी में आपके पास 1000 जन आ गए तो आप सबको एक साथ दिखा रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने Broadcast, in a broadcast, the other person has to have your number saved, Exactly. otherwise they will not receive your message. एब्सोल्युटली। एंड दीदी एक और चीज है, जैसे मैं अगर बात करूं, मैं आई मीन आई हैव सीन मेनी ऑफ द पीपल, आई मीन मेरे पास उनका नंबर भी सेव नहीं है, बट अननोइंगली आई एम गेटिंग सच मास मैसेजेस, जिसमें मुझे जो अभी From प्रयास ने business दिखाया था accounts. वैसे मैसेज आया। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन है कि उनके पास मेरा नंबर क्या डेटाबेस से कहीं से उन्होंने लिया, कहीं से आया या हो? दे हैव, और उन्होंने मुझे पंच करना, तो इट इज अ काइंड ऑफ सेम सिनेरियो वी कैन डू इन द लेटर फेज। हमारे को Yes. भी अपने ब्रांड को अगर प्रमोट करना, वी कैन असेंबल एंड पास थ्रू दिस बेसिक इंफॉर्मेशन वेयर इन द माय इंस्टा हैंडल एंड बायो विल बी देयर, पीपल कैन फ्रॉम मूव फ्रॉम देयर टू आवर लिंक डायरेक्टली, इज इट? Absolutely. Right? That's what the benefit of WhatsApp business will be. Okay. So in that case, I will I have two numbers. One is my on which I am having the WhatsApp personal account. Other number I don't. I have only call option. So that number I can convert into WhatsApp business WhatsApp account. business. The Yes. same mobile I will be using with both the numbers. And Yes. from that business account, I can create the this kind of community or so and so forth, and move the traffic from the to the TST. Understood? No? That's how it is. बिल्कुल सही। एंड आई थिंक मनोज सर के साथ इस कॉन्वर्सेशन में बाकी सारे लोगों को भी क्लैरिफाई हो गया होगा बहुत सारी चीजें, बिकॉज इन द क्वेश्चंस आंसर छुपे हुए थे। राइट, परफेक्ट, ग्रेट। सो ये इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग मैसेजेस, एनी व्हिच इज दिस प्रेजेंटेशन। One more question, शालिनी। यस। ये जो आपने व्हाट्सएप पे गूगल फॉर्म बताया है, ये मेरे को क्लियर नहीं हुआ कि किस तरह से अपलोड करना है, या आप जैसे व्हाट्सएप पे स्टोरीज डालते हैं ना, हैव यू ट्राइड एडिंग अ स्टोरीज एवर? सो डू वन, कैन यू गो ऑन व्हाट्सएप राइट नाउ? ओके। व्हाट्सएप पे जाइए और फिर वहां पे चैट्स और बीच में आपको स्टेटस दिखेगा। चैट और स्टेटस है? हाँ, स्टेटस पे क्लिक करिए जी। यस। अब अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं विद अ लिंक, तो आप देखिए राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक पेंसिल आइकॉन बना होगा। आप उस पेंसिल आइकॉन पे जाइए, कुछ भी लिखिए, राइट, एंड देन ओवर हियर आप जो भी लिंक है, फॉर एग्जांपल मैं फॉर एग्जांपल ये एक लिंक ले रहा हूँ, आप भी किसी भी वेबसाइट का लिंक ले लीजिए फॉर एग्जांपल, एंड उसको सीधा कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए इन दिस एरिया। ओके ओके, राइट, तो यहाँ पे आपका वो लिंक पेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ www.tht.com इस तरीके से, या फिर इंस्टाग्राम का जो आपका यूआरएल आता है, या फेसबुक पेज का यूआरएल आता है, जो भी आप डालना चाहे वहां पे डाल सकते हैं। श्योर सर, क्लियर। एट द सेम टाइम यू कैन ऐड एनी पिक्चर, जैसे आपने कोई पिक्चर जो है वो ऐड करी, राइट, और उसके ऊपर जैसे आप कोई पिक्चर डालते हैं तो उसके ऊपर भी आपके पास एक स्माइली का आइकॉन आता है फॉर एडिंग स्टिकर्स। तो आप स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, इमोजीज ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप टेक्स्ट उस पर लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप वहां पर यू विल फाइंड दिस पेंसिल आइकॉन अगेन, जिसके चलते यू कैन जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट योर स्पेसिफिक लिंक ऑन द इमेज एज वेल। ठीक है, फाइन सर, फाइन। तो आपका मतलब है यहीं पे मैं स्टोरी क्रिएट करूंगा और यहीं से पोस्ट करूंगा व्हाट्सएप पे डायरेक्टली? एग्जैक्टली, इसी में एग्जैक्ट। एक लास्ट क्वेरी, दो इट इज, मेरे को ना एक चीज जानना है कि सपोज मेरे पास मतलब मेरे अकाउंट में 4000 नंबर हैं फॉर एग्जांपल, अब मैंने उनका ब्रॉडकास्ट क्रिएट नहीं किया, नाउ आई वांट टू वन कॉमन मैसेज टू एवरी वन, मतलब ऑल द पीपल, इज दिस पॉसिबल? नॉट इन द बेसिक वे जैसे हम अभी देख रहे हैं, इसमें नहीं होगा। आपको एक्सटर्नल थर्ड पार्टी टूल लेना पड़ेगा, राइट। व्हाट्सएप का जैसे गपशप आता है, वॉटी करके आता है, WATI.io वो आता है, एक और टूल आता है, एंड दे आर लाइक
$15, $20 पर मंथ। उसमें क्या होता है, दीज आर ऑफिशियल पार्टनर्स ऑफ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कंपनीज को अपनी एपीआई दे के रखी है। एपीआई का मतलब उन्होंने एक इंटीग्रेशन का लिंक दे के रखा है, और जहां पे बोला कि आपके जरिए लोग ब्रॉडकास्ट मैसेजेस कर सकते हैं टू अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल, लेकिन वो भी इनिशियली नहीं, राइट। दैट विल स्टिल बी, व्हाट्सएप बहुत ज्यादा ख्याल रखता है इस चीज का कि हम धीरे धीरे अपने नंबर ऑफ मैसेजेस बढ़ाएं, राइट। अगर आप एकदम से बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, आप तुरंत आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल आल्सो स्टार्ट मार्किंग यू एज स्पैम। ये भी आप नहीं चाहते। जब लोग आपको रिमूव करें और मार्क एज स्पैम करते तो प्रॉब्लम है। तो इसमें सर मैं एक बात बताइए, फिर ऐसा क्यों होता है कि मेरे पास ऐसे नंबर व्हाट्सएप नंबर आते हैं जो नंबर मेरे फोन में सेव ही नहीं है? हाँ, वो वही मैं क्या कह है? रहा हूँ, वो वाली जो कंपनीज है या वो जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो वो कर रही हैं, उनके पास व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट भी होगा और उनके पास एक थर्ड पार्टी टूल भी होगा और आपका डेटा भी होगा, उन्होंने मर्ज कर दिया। सो इफ यू वांट टू बी यूटिलाइजिंग इन दीज पर्टिकुलर एक्सटर्नल टूल्स, जैसे हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए करते हैं, राइट। हम 6-7 अलग अलग व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट लेते हैं, उन सबको एक सिंगल थर्ड पार्टी टूल में डालते हैं, जहां पे हमारे पास लिमिट होती है टू सेंड 20,000 मैसेजेस इन अ मंथ और 30,000 मैसेजेस इन अ मंथ। तो फिर वहां से पॉसिबल हो जाती चीजें, ओके। बट यू विल नॉट हैव टू गो इनटू दैट डिटेल एज ऑफ नाउ। वो बहुत ही, जब यू नो यू रेडी टू इन्वेस्ट इन सर्टेन टूल्स एंड यू रियली वांट कि मुझे इतने बल्क मैसेजेस करने हैं, personally I would suggest that bulk messages would not be very relevant. It's much better to bring people to a particular community, engage them, then give them value. वरना फिर वही होगा जैसे आपको फील हो रहा है, मेरे पास क्यों मैसेज आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, कौन है, इनको मेरा नंबर कहाँ से मिला, राइट। और आपको स्पैम मार्क कर देंगे, ओके। ऑलराइट, सर शर्मा सर, यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ, मैंने ये देखा ना, जो व्हाट्सएप के आप बता रहे हो इसमें स्टेटस प्राइवेसी में हमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमें कौन सा रखना कम्युनिटी के लिए? तो पब्लिक रखे तो बेहतर है। और हाँ, उन लोगों के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, जैसे प्राइवेसी में शो ओनली टू या डू नॉट शो टू, ऐसा आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं, लेट्स से यू आर डूइंग 2 थिंग्स टुगेदर एंड यू डोंट वांट सर्टेन स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीपल टू सी योर कंटेंट, योर स्टोरीज, तो आप उनको वहां पे अपने लिस्ट में डाल सकते हैं कि इन्हें ना दिखाई जाए मेरी स्टोरीज, बाकी सब देख लें। हाँ, इसमें लिखा ना ओनली शेयर विद या माई कंटेक्ट, एक्सपेक्ट माई जो कंटेक्ट है उनके साथ शेयर करना। सो ओनली शेयर विथ या डू नॉट शेयर विथ, ये भी ऑप्शन आता है कि एक्सक्लूड दीज पीपल। तो अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं, उसमें से ऐसे 30 जाने हैं जिनको बिल्कुल कतई नहीं पता लगना चाहिए कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ जिंदगी में, नजर लग जाएगी, तो आप उन्हें हटा दीजिए, राइट। दे विल नॉट सी योर स्टोरीज। ओके ओके, ऑलराइट। यस, इज देयर एनी ऑप्शन कि हम वो लिस्ट सेव कर सकें? कौन सी वाली? किसको शो करना है या किसको शो नहीं करना है? वो बाय डिफॉल्ट सेव हो ही जाती है व्हाट्सएप में। No, sometimes I want to present all these things to everyone, but हाँ, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर पुटिंग अप अ स्टोरी, फॉर एग्जांपल अभी मैं डाल रहा हूँ तो मुझे दिखाया 36 लोगों को नहीं दिखाई दी जाएगी, लेकिन आई कैन स्टिल क्लिक ऑन इट एंड से ओके, इनको भी दिखा दो। okay. Okay, that could be for individual content. हम चेंज कर सकते हैं किसी भी समय। जी जी, it's not a full and final list, right? Cool. ओके, So now ये जो कम्युनिटी मैनेजमेंट है, अब जो कम्युनिटी आ गई है व्हाट्सएप पे, आप मैसेजेस करें, थोड़े से गाइडलाइंस हैं, ये चीज हमें समझनी जरूरी है, सो दैट लोग जो आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको वैल्यू मिले। एंड दिस हैज वेरी सेम काइंड्स ऑफ इनसाइट्स एंड सेम काइंड्स ऑफ वैल्यू जो कि वी हैव टॉक्ड अबाउट टाइम एंड अगेन, फेसबुक पेज के टाइम भी और इंस्टाग्राम के टाइम पे भी। सबसे पहले आपकी कम्युनिटी ज्वाइन कैसे करेगा? आई रियली लाइक द फैक्ट, जैसे शालिनी मैम ने कहा था कि इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं 1000 लोगों की कम्युनिटी बनाऊं। आई कुड बी हैविंग 200 जन जो किड्स वाली कम्युनिटी हो, 200 जन जो फिटनेस वाली कम्युनिटी हो, 200 जन जो रेसिपीज वाली कम्युनिटी हो, बिकॉज इन लोगों को उसी तरीके का कंटेंट देखना है जिससे उनकी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर मैं एक बैचलर हूँ 25 से 30 साल का और मुझे खाना ढंग का नहीं मिल रहा है, तो मैं वो कम्युनिटी ज्यादा ज्वाइन करना चाहूंगा जहां पे मैं DIY, डू इट योरसेल्फ, क्विक हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड बना पाऊं।
लेकिन अगर मैं एक ऐसी कम्युनिटी में ज्वाइन कर रहा हूँ जहाँ पे रेसिपीज बहुत कम आ रही हैं लेकिन एक्सरसाइजेस की बहुत बातें करी जा रही है, तो मेरे लिए वैल्यूबल नहीं है। तो बेटर रहता है कि जब आप कम्युनिटीज भी बना रहे हैं तो डिसाइड कर लीजिए एक कम्युनिटी किस टारगेट ऑडियंस के लिए, दूसरी कौन से के लिए, तीसरी कौन से के लिए। अकॉर्डिंगली आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि हर एक कम्युनिटी में आप कौन सी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अकॉर्डिंगली वो जो यूनिक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं उसके चलते आपको पता होगा कि इस कम्युनिटी को सिर्फ ये भूखे लोग हैं, बेचारे खाना नहीं खा पाते, दिन का एक मील खाते हैं, तो उसी तरीके का कंटेंट डाला जाए, राइट। सेकेंडली, जब वो एंटर करें इस कम्युनिटी में, what do you want them to do? This should be a part of your SOP. Every time you're getting a new member in your community, you should ask them, introduce yourself. What kind of problems you're looking to solve in your life? What kind of answers you seek from so many people? एक ice break करना is a responsibility of the community manager. राइट, वाई पीपल ज्वाइन कम्युनिटीज। हम ऑफलाइन कम्युनिटीज क्यों ज्वाइन करते हैं? ताकि हम नेटवर्क करें, लोगों से आइस ब्रेक करें, इन्फॉर्मेशन सीख करें। सेम थिंग आल्सो नीड्स टू हैपन ऑन द ऑनलाइन कम्युनिटीज। That ice breaking needs to be there. So you would need to be putting up that welcome Chetan Sharma ji on this new community. We are glad to have you over here. Could you please introduce yourself? What is your aim of joining this community? What is it that you're looking for? And how do you think we can help you? तो आप अपना आंसर लिखेंगे, बाकी लोग भी फिर उसको देखेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद व्हाट डू यू वांट द मेंबर टू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस? आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं? क्या आप उनसे रेगुलर एंगेजमेंट चाहते हैं? तो आप कोई क्विज करवा रहे हैं या फिर कोई एक एक्टिविटीज करवा रहे हैं, तो कम्युनिटी इज ओनली एज गुड एज द एंगेजमेंट ऑफ द मेंबर्स, राइट। आप खाली करते रहे चीजें, सामने से डेड रहे चीजें, यू डोंट वांट दैट। यू ऑल्सो वांट कि सामने वाले लोग भी, they should also be contributing to building that community, just like we were talking about in our groups, right? We would want that maximum contribution to happen, and therefore it is very necessary that you identify कि आपकी community में enablers कौन है। We keep talking about moderators, we keep talking about admins हर एक पेज में या ग्रुप्स में, but the best thing in a community or the best individual in a community is the enabler. वो व्यक्ति जो कि बाकी लोगों को पुश कर रहा है to speak, to talk, to take an action. Those people could be from within your team, or certain people could be motivated individuals जो नया नया community join करना चाह रहे हैं या आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, right? So you need to identify those enablers, and with those enablers you would want to be ensuring कि आप उन्हें लगातार motivate करते रहें। दूसरी चीज, आपकी कम्युनिटी की ब्रांडिंग। इन योर केस इट विल बी THT ओनली। अब ये जो कम्युनिटी है या जो ग्रुप है, उसके रूल्स सेट करने भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने फेसबुक के किए, दैट व्हाट विल नॉट बी टॉलरेटेड इन द कम्युनिटी। हम इंडिया में रहते हैं, एवरी नाउ एंड देन यू विल हैव some political discussion, some kind of activities happening. So you have to very specifically identify what is not accepted in this group, what should be expected, right? What is it that people will have to do if they want to continue to remain the part of this community? How much engagement they should be doing? What kind of goals do you want to set for themselves? For example, every person at the end of Friday should say कि मैंने कितने लीटर पानी पिया इस हफ्ते में, ट्रैक कर रहा हूं मैं, और मैंने कितना वजन लूज किया, फॉर एग्जाम्पल। तो जब everybody collectively is doing that efforts and everybody is able to see it, you'll have more responses. And all of this facilitation needs to be done by the community manager. For example, अगर आप देखें, a lot of time if we are part of different groups, किसी ने कोई प्रॉब्लम डाली, अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि मैं प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन एक अंदर से हिच होती है। लेकिन जो कम्युनिटी मैनेजर है या कम्युनिटी एनेबलर है, who knows who's good at what, right? Who knows कि किसकी क्या लाइफ स्ट्रगल थी, वो उनको टैग करे that hello, can you please help this particular person, and so on and so forth. Can you add your inputs? For example, प्रियश ने नई कम्युनिटी ज्वाइन करी, वो लिखता है कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा पेट बढ़ता जा रहा है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा काम से, मेरे आँख के नीचे काले गड्ढे हो रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। अब now Manoj Gupta, who is the enabler of that group, would say that मैं आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता हूँ, and you know what, Chetan Sharma ji has gone through the same journey and he can help you better.
सो आप इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, देन दे स्टार्ट टॉकिंग विद ईच अदर, देन तब जाके कम्युनिटी का उत्थान होता है. You don't want one sided conversations always. You want to bring people to the pedestal. और जैसे जैसे अगर मनोज जी चेतन शर्मा जी को एक वो दे रहे हैं, एक ओहदा दे रहे हैं कि आप मदद करिए, so Chetan ji will also identify that I am being valued as a core member of this community, and he would also want to work hard to bring in more individuals to the community, drive in more engagement. That's इसमें कहीं पे भी डिजिटल मार्केटिंग साइड कोई नहीं है. इट्स मोर अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द पीपल. जैसे ऑफलाइन वर्ल्ड में था, अब ऑनलाइन वर्ल्ड में कर रहे हैं. एंड विद दैट व्हाट वी आल्सो डू, दिस इज समथिंग आई एम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप. वी आइडेंटिफाई पीपल रेगुलरली, मंथली बेसिस पे, स्टार परफॉर्मर्स फॉर एग्जांपल, who has been an individual within our community जिसने बहुत बढ़िया काम किया. तो आप THT के ब्रांड के कैनवास एक सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं. You will get their display picture from that WhatsApp, लगाया डाला, and unexpectedly even that particular person would not even know. आपने डाल दिया that congratulations HK Sharma ji, you are the proud star partner of our community or star performer, because आपने न केवल हमारे दिए गए गोल्स को अचीव किया है, पर आपने मेरी पूरी कम्युनिटी को भी एंगेज करके रखा है. जैसे we have you could say the employee of the month of kind of awards, the best performing community member. Again, इससे क्या होता है, overarching competitiveness बनती है अंदर, बहुत ही subtle competitiveness कि अच्छा this person, फलाना person got a star member award, और आपने सर्टिफिकेट भी दिया. नेक्स्ट मंथ किसी और ने दिया, तो एक तीसरे बंदे में आएगा कि अच्छा let me try and do this time, I will go at better. So they will do furthermore. वो और ज्यादा एक्टिवेट होंगे, वो और इंस्टाग्राम पे आपके लोगों को लाएंगे, वो और व्हाट्सएप पे लोगों को एनकरेज करेंगे, वो और स्टोरीज डालेंगे, राइट. सो यू कैन सेट सर्टेन KPIs फॉर पीपल विद इन योर कम्युनिटी कि आप ये चीजें अचीव करिए. जो ज्यादा करेगा वो हमारा स्टार परफॉर्मर ऑफ द वीक और मंथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Sorry, and everybody likes a certificate, even if it is a virtual certificate, right? एक वो मिलता है कि हाँ कुछ किया है, right? I'm getting something. And LinkedIn पे लोग डालते हैं, या उनकी स्टोरी पे डाला गया. आप उनको एनकरेज करोगे कि वो LinkedIn पे डालें, अपनी स्टोरी पे डालें, तो आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी और ज्यादा बढ़ रही है. And it also makes sure that you are actually valuing the contribution of other people who are coming into your business or who can be a part of your business. Make sense? So ये जो community management वाली guidelines हैं, this can not only be done on WhatsApp, but you should also try and do it on your Facebook groups. Facebook group और WhatsApp community काफी कुछ similar है, सिर्फ platforms different है, interface different है. Okay? So I hope this is not a very lengthy activity over here. काफी straightforward, and most of us are quite used to using WhatsApp as well. Plus, please tell me if there are any specific questions, any doubts on this. Yes, Rakesh sir. प्रियांश है, बताएं आप कि जस्ट कि हम यदि ये बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप से, जैसे कहा कि आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लिंक करते हैं, तो जो भी हम कंटेंट व्हाट्सएप अपने बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट में पोस्ट करेंगे, तो दैट कंटेंट विल बी रिफ्लेक्ट ऑन द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आल्सो. नो, इट विल नॉट ऑटोमेटिकली डू दैट. वैसा नहीं होगा, राइट. वो आपको शेयर करना पड़ेगा अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अलग से. आप कनेक्ट करने से तो ये कर रहे हैं कि लोगों को मैसेज करने का ऑप्शन दे रहे हैं आपको, राइट. कंटेंट ऑटोमेटिकली शेयर नहीं होगा. तो मैसेज क्या जाएगा उनको, मतलब हम यदि कनेक्ट कर दिया तो मैसेज क्या जाएगा? नहीं, मैं समझा नहीं. आप देखिए, कनेक्ट करने का जो मेन मकसद है, अगर आपने व्हाट्सएप को फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट कर दिया, इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप से कनेक्ट कर दिया, राइट, तो वहां इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक बटन या एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अगर किसी को वन ऑन वन आपसे कनेक्ट करना है, तो वहां पे एक बटन है सेंड व्हाट्सएप. तो सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो इमीडिएटली आपके पास मैसेज आ जाएगा, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट, और हाय आई एम इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग विद यू, इस तरीके से. तो आपके पास उस बंदे का नंबर भी आ गया व्हाट्सएप पे, और आप उनसे एक वन ऑन वन चैटिंग शुरू कर सकते हैं. ओके. जो हमारा मतलब वो जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो कंटेंट होंगे, जो पोस्ट है, उसके बेस पर he will just ask for the I want to connect on their business WhatsApp account.
वहां पर हाँ बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट में फिर उसका नंबर, उसका नेम सब पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, देन वी कैन कंटेक्ट अस। एब्सोल्युटली ओके, हाँ दैट्स क्लियर, थैंक यू। Prash, we can Haji, take one more question. Rakesh is there, then we can move in from WhatsApp. Yeah. Sorry, I'm I said we can take Rakesh is there. There's a question. Please go ahead. Haji, हेलो प्रियांशी, हेलो एवरीवन। प्रियांशी, क्वेश्चन था मेरा कि जैसे आप बता रहे हैं कि कम्युनिटी पे व्हाट्सएप पे लोग आपस में कनेक्ट करेंगे, तो वो क्या कम्युनिटी पे एबल होंगे जो बाकी सारे पार्टनर हैं मैसेजेस करने के लिए? बिकॉज हमने बोला कि बिगनिंग में ओनली द एडमिनिस्ट्रेटर कैन डू द मैसेज। ये जो व्हाट्सएप कम्युनिटी एज अ फीचर, राइट, जहाँ पे 1000 लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, वहां पर एज एन एडमिन आप ही वहां पे मैसेजेस डाल रहे हैं। ओके, not allowing anything else, but that does not mean कि आपके बाकी के ग्रुप्स इनएक्टिव हो गए। जो आपके ग्रुप्स हैं वो सबसेट्स है, छोटे छोटे सबसेट्स हैं, राइट। वहां पे तो आदान प्रदान रहेगा। तो आप कम्युनिटी समझिए। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि आपने 4 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप है किड्स के लिए, एक है रेसिपीज के लिए, एक है एक्सरसाइजेस के लिए, एक है मेंटल हेल्थ के लिए। ये 4 ग्रुप्स, इनमें अपना अपना कंटेंट जा रहा है, अपने अपने एंगेजमेंट्स हो रही हैं, अपनी अपनी बातें चल रही है। लेकिन आपने एक कॉमन कम्युनिटी बनाई। जब भी टीएचटी कुछ बड़ा कर रहा है, जब भी आपको लगता है कि ये सारे लोग एक साथ जुड़ के किसी ना किसी चैलेंज में आ सकते हैं, किसी ना किसी इवेंट में आ सकते हैं, उसके लिए आपने कम्युनिटी बनाई है। प्लस उस कम्युनिटी में आप एवरीडे या रेगुलर बेसिस पे जेनेरिक नॉलेज भी दे रहे हैं, right, which will not be specific to recipes, which may not be specific to kids, which may not be specific to something else, लेकिन लाइफ का ज्ञान which is also necessary, या basic fitness tips which is also necessary, तो वो आप engage रख रहे हैं। keep it, जो ये separate community बन रही है 1000, 1500, 2000 जनों की, वो क्या बन रही है? वो आपकी specific community बन रही है for your bigger overarching जो vision आपको लेना है। बट simultaneously आपके जो छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे, राइट, वहां पर आदान प्रदान होगा, वहां पर आप लोगों को एंगेज करें, वहां पे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, उन क्वेश्चंस को आप आंसर करें। गॉट इट, ओके, थैंक यू थैंक यू। नो वरीज। एनी अदर क्वेश्चन? आपने एक कभी बात बोला था कि केपीआई सेट होना चाहिए कि स्टार परफॉर्मर ऑफ द वीक और द मंथ आएगा निकाल के। तो इनेबलर कौन है जो ज्यादा इनेबल कर रहा है, ज्यादा लोगों को कम्युनिटी में ला रहा है? तो ये कैसे पता लगेगा कि कितने लोगों ने कितना ट्रैफिक लाया हमारे कम्युनिटी पे? हाउ डू वी गेट टू नो? So I am talking not on the basis of how much traffic people are bringing to your community. I'm talking more in terms of कि मान लीजिए आपकी टीम में यहाँ पे 25 जन हैं and उस particular group में 3 or 4 people are there. Now 4 groups for example, और हर एक ग्रुप में 4 जन हैं। एक ग्रुप में मनोज सर, जेपी सर, मुरलीधर सर एंड प्रियश। अब इन चारों में से who is that individual who is constantly helping out people, constantly guiding people, right, constantly trying to solve the problems? ये एक हो गया enabler वाली KPI. So from the inside of the team we have 4 people and every month we can say that okay, the star enabler of this month is Manoj Gupta sir, right, जिन्होंने सबसे ज्यादा कोशिश करी है एक्टिवेट रखने के लोगों को। और इसके लिए भी आप एक पोल रन कर सकते हैं विद इन योर कम्युनिटी, तो दैट वुड बी अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड आप एंगेज करें। दूसरी चीज हो गई जो सामने वाले लोग हैं, 4 जन तो इंटरनल हो गए, लेकिन बाकी के जो 250 लोग हैं वो जो एक्सटर्नल लोग, उन लोगों में से ऐसे कितने जन हैं दैट यू कैन आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली, जो आपने कोई चैलेंजेस सेट करी हैं आपके पर्टिकुलर ग्रुप में कि एवरी वीक यू हैव टू कम अप विद सच एंड सच, एंड यू नो कि 200 में से 10 जन होंगे जो काफी एक्टिव रहेंगे, उन 10 में से भी कुछ 5 जन होंगे जो हर चीज के लिए एक्टिव रहेंगे, राइट। तो जो आप चैलेंजेस दे रहे हैं या जो आप पर्टिकुलर एक्टिविटीज करने को कह रहे हैं, जो आप टारगेट्स दे रहे हैं, ऐसे कौन लोग हैं हु आर एक्चुअली ब्रिंगिंग बैक रिजल्ट्स? एंड फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं फ्रॉम 250 पीपल की इस वीक का आपका लक्ष्य है कि आप इतने लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, राइट। अब जनरली मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि वीक के एंड में हम ये देखेंगे कि किसने सबसे ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाए, तो एक बंदा उन्हीं लोगों के पास जाएगा ना जो उसके फ्रेंड सर्कल में, राइट, या जिनको वो जानता है। सो यू कैन आस्क देम कि आप अपनी लिस्ट दीजिए, आप अपनी लिस्ट दीजिए, आप अपनी लिस्ट दीजिए, जिन जिन लोगों ने मेहनत करी आप अपनी लिस्ट दीजिए। वी विल बी एबल टू कोलेट कि अच्छा किसके वहां से सबसे ज्यादा फॉलोअर्स आए हैं हमारे पास मैनुअली,
और आपने उनको स्टार कम्युनिटी पर्सन बना दिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यू हैव टू थिंक ऑफ सर्टेन इनोवेटिव आइडियाज जिससे आपकी कम्युनिटी भी ग्रो होती रहे अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो लोग उस कम्युनिटी में हैं, दे आल्सो फील इंसेंटिवाइज्ड रेगुलरली। जैसे एक एग्जांपल मैं मेरे थॉट में, कैन वी डू दैट आल्सो, से फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 ग्रुप हैं और मैं जेनरिक टीएसटी का हमारा लोगों के साथ में कोई मैंने स्टोरी या कोई फीड है, मैंने उनको ग्रुप को एक बाइंड किया कम्युनिटी का, मतलब वो क्या आपने बताया था पीछे 1000 लोगों को एक साथ में, और वो मैंने फ्लोट कर दिया है और वहाँ मेरा इंस्टा का हैंडल पड़ा हुआ है। तो पीपल कैन, आई मीन कैन वी डू दैट? पहला तो ये टीएसटी का पीपल जो अलग अलग ग्रुप है, पीपल फ्यू पीपल में इग्नोर ऑल्सो, फ्यू पीपल विल ऑल्सो सी टू इट। अब वो ग्रुप अलग नहीं, वो ग्रुप नहीं है, फेसबुक ग्रुप नहीं है, ये बेसिकली व्हाट्सएप के 4 ग्रुप्स में बात कर रहा हूँ जो मेरे फोन में है। तो मैंने उन चारों ग्रुप को असेंबल किया और मैंने अपने टीएसटी का कोई पोस्ट वहां डाल दिया विच इज कैरिंग माय इंस्टा हैंडल। तो उसको अगर लगेगा दैट इज दिस पॉसिबल, द पीपल विल, सम ट्रैफिक विल फॉलो दैट पर्टिकुलर। दैट इज यू विल बी एबल टू सी दैट कि आपके उस ग्रुप में से कौन नए लोग जुड़ रहे हैं या बट वो ट्रैफिक आ मुझे रहा है। कैसे पता चलेगा, बिकॉज वो तो वो एनोनिमस आपको ग्रुप्स मैन्युअली है। देखना पड़ेगा, वो आपको मैन्युअली देखना पड़ेगा कि उस ग्रुप में कौन है। दूसरी चीज ये करी जा सकती है, एक और एक्टिविटी जो काफी मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं, आपने अपने पोस्ट डाले और हर हफ्ते आपने देखा कि अच्छा ये एक आदमी है जो हर एक पोस्ट पे लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है। तो मैं उसके साथ डायरेक्ट डीएम कर सकता हूँ, डायरेक्ट पहुंच सकता हूँ उसके साथ, देन आई कैन कनेक्ट। बिकॉज ऐसे तो क्या है ना कि जैसे भी अभी मुझे लग रहा है कि किसी भी ग्रुप ने मुझे ऐड किया तो इट्स ए वाओ फीलिंग फॉर मी कि ठीक है भाई आ गए 250-500 लोगों का एटलीस्ट। तो मीन दिस लार्जर अ पूल वी कैन ब्रिंग इट टू इनटू आवर पेज लेटर ऑन आल्सो, दैट्स हाउ इट देन आप ये अभी फर्स्ट स्टेज या पहला पड़ाव खत्म करेंगे ना ये वाला, एंड लेट्स से हम 6 महीने बाद मिलते हैं, तो उसके बाद और हाई लेवल ट्रैकिंग एक्टिविटीज भी हैं विच वी कैन लुक इनटू। इंडिविजुअल लिंक्स देना लोगों को, एफिलिएट लिंक्स जैसे हम कहते हैं, जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं हनी जी के यहाँ से कितने जाना है, मनोज जी के यहाँ से कितने जाना है, बट वो थोड़े उसके लिए टेक्निकलिटी वाइज भी हमें ज्यादा चीजें समझनी पड़ती है। यस मैम, यू Yeah, Priyash, I think this will be very, very valuable for us as we go a little bit further in our yeah. Yeah, and that's good. So definitely we'll have a WhatsApp communication because it just reaches people right away. So that's very good. क्योंकि वो तो उनके फोन पे पहुंच ही रहा है ना, instead of them coming to our Instagram and that. Yeah. So can we, is there anything else? Can we move? There is some questions and some things more. Are we good So with you can WhatsApp? go ahead with the questions. We're done with WhatsApp, but if there are any other questions pertaining to anything else, we're open for that. Yeah, Priyansh, you told that you'll cover later on. ये बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस पे एक लिंक है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, वो आपने थोड़ा सा इलैबोरेट। तो व्हाट्सएप बिजनेस पे जो लिंक है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम को वो इसलिए है कि आपने वहाँ व्हाट्सएप को, अगर मान लीजिए इंस्टाग्राम से आपने व्हाट्सएप को लिंक नहीं किया या फेसबुक से इंस्टाग्राम को लिंक नहीं किया, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज है एडवर्टीजमेंट की, कि जो आप एड्स नहीं रन कर रहे, अगर आप व्हाट्सएप के जरिए पेड एड्स यानी व्हाट्सएप को पैसे देकर अपने एड्स दिखाना चाहते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो भी आप वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये वो ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा, वो लिंक इसलिए कहता है। हाँ जी। बट वो फिर व्हाट्सएप पेज पे कैसे जा रहा है? सॉरी, वो लिंक व्हाट्सएप पेज पे, हमें फेसबुक पेज पे जा, क्योंकि वो लिंक कर दिया होगा ना, फेसबुक पेज से लिंक कर दिया होगा। या तो आप जैसे हमने पहले बार देखा था, फेसबुक पेज में एक ऑप्शन आता है लिंक विद व्हाट्सएप, जी। या तो आप वहां से लिंक करिए, वहां से लिंक कर दिया है तो आप फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो उधर चले जाएंगे। अच्छा, मतलब बोथ वेज इट कैन बी लिंक। एग्जैक्टली। ओके। Hatinder, is your question regarding the WhatsApp? You can ask, or something else. Hatinder, frozen ho gaye? Okay, so Priyash, I wanted to ask that eventually we're going to be doing challenges and we're going to be doing Instagram lives. So उसके बारे में कुछ आपके views हैं, और एक question भी आया उसके बारे में. Sudhir had to drop off, but he had a question. And also
one challenge is that, so I'm just asking these all, then you can see how you want to address it. कि जब Instagram पे Sudhir specifically asked that question, when he's going, it's all the English music that's coming up and not the Hindi. What's the way to reach it? You can search for it. So search, specific, yeah. With the audio search, you can type. For example, kal ho na ho, type it, you'll find it, right? Or a specific चाहिए, ठीक है, ठीक है. अगर आपको कोई specific चाहिए was saying that maybe he hasn't gone in the search. Did you? Because I asked him if he put in the search bar Hindi. He goes, yes, I tried, but anyhow, this is something technical. Hopefully, Sudhir, we can resolve it. Otherwise, we'll have to see. तो उसी के बारे में आपने बोला था जब हम म्यूजिक आता है तो कई तो शो करते इतनी रील्स में यूज हुआ है, कहीं पे नहीं शो होता है. What does that mean? Like so it's not. In some certain times it does not show. That does not mean कि वो बहुत ज़्यादा use हुआ है कि नहीं, but that's not that. But it's particularly showing under those particular musics जहाँ पे Instagram को भी innate belief है कि ये kick off करेगा, तो मुझे metrics दिखाने चाहिए. Understood. So it's good. Certain songs are original songs, certain songs are branded songs, certain songs are like ठीक है अभी चल रहा है. It does not show how many reels it is having. The moment थोड़ा सा भी वो बढ़ने लग जाता है, then you'll start seeing metrics coming up over there. Plus the only problem is with Instagram has been continuously we reels पे बहुत काम कर रहा है. Every 2 weeks there's new update which is coming from there and changing. So certain things will probably get even more articulate probably 1 month, 2 months down the line. Okay. So now we really, this is something, we've had an amazing session. We only have one session left, but we definitely want to talk, concentrate a little bit on the live sessions, what to do, how long they should be, and also on like challenges. So if let's say in our Facebook or Instagram, we'll have like a 21-day challenge. So all people who want to detox, or all people who want to lose weight, or people who want to change their diet from right now processed foods to healthy. So something like that in future I want to do. So I think you raised a very good point, ma'am. And because we don't have a fixed agenda for the last session, we specifically kept it open for discussing anything that comes out. So I will prep for this, for live sessions, sessions and any kind of engagement challenges that can come. Which also brings me to a very quick point right now. If you would have seen the news yesterday, Meta has brought up that blue tick that you can pay or subscribe to it if you'd want to be getting that blue tick. Right? Earlier, जो एक long drawn process होता था, there was a little bit of किसको blue tick मिलेगा या नहीं मिलेगा. Now anybody can have a verified blue tick with their Instagram or Facebook page or whatever, provided they are paying that subscription fee to Meta. So if at all later on you would want to be getting that blue tick on your Instagram account, you can do so. But then what's the purpose of a blue tick if people can? I think it's just more for, so it's not for the purpose of that you are an influencer with a blue tick. It's more for the authenticity that you are the original one. Oh, okay. We'll look into that. Right. So once you, for example, purchase a blue tick for a particular brand, and if somebody else tries to get a blue tick for the same name, for the same logo, it's like a trademark happening within Instagram itself or Meta. ये सब ट्विटर का करा जा रहा है, इलॉन मस्क का. ट्विटर पे नहीं करते थे, यहाँ पे भी नहीं होता. Nevertheless. Okay, Hatinder, you have a question? Yes, very good evening, everybody. जैसे प्रयास जी आपने व्हाट्सएप पे बताया ना, अभी ना टेलीग्राम पे भी बहुत लोग कम्युनिटी बना रहे हैं. ऐसे मेरे को ऐसे किसी ने 2-3 ग्रुपों में डाल दिया. तो सेम क्वेश्चन भाई, वी कैन आल्सो डू द सेम एज ऑन व्हाट्सएप. जैसे इसे टेलीग्राम पे भी ऐसे ही कर सकते हैं. टेलीग्राम पे आप कर सकते हैं. पर्सनली आई डोंट प्रेफर टेलीग्राम अभी, because Telegram has become very much synonymous to a lot of scamming, financial and what not. क्या क्या चीजें हो रही हैं वहाँ पे, monitored होती है, नहीं होती हैं, तो एक trust factor वहाँ पे है नहीं. और अगर आप यूजर बेस में देखेंगे, सिर्फ टेलीग्राम बहुत अच्छे इंटेंट के साथ आया था, लेकिन वहाँ पे बहुत ही चीजें सीक्रेसी वाली भी हैं, कम्युनिटीज एंड ऑल ऑफ दैट. एंड इतने सारे स्टॉक मार्केट के नाम पर, नहीं तो पता नहीं किस किस के नाम पर बहुत सारे स्कैम्स फ्रॉड हुए, तो लोग उससे दूर जा रहे हैं. राइट?
फोकस अपना वहां रखें जहाँ पे सब हैं और सब आसानी से आ सकते हैं, सबको एक आदत और लत पड़ चुकी है, विच इज व्हाट्सएप। किसी भी बंदे को किसी नए प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए एक इनर्शिया तोड़ना पड़ता है, तो एक आदत लगानी पड़ती है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। तो व्हाई डू दैट वर्क व्हेन वी कैन डू इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ओके, थैंक यू। प्रियांश जरा सा ये बताएं, जैसे कि हम जब रील बनाते हैं, जब हम कोई म्यूजिक जब ऐड करते हैं, म्यूजिक जब उसको हम सेलेक्ट करते हैं, उस समय म्यूजिक तो ठीक है, अच्छी तरह आती है। उसके बाद जब म्यूजिक को हम उसके बाद रील में ऐड कर लेते हैं, फाइनली प्रिपेयर हो जाता है कंप्लीटली, जब हम उसको रन करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। ये क्या रीजन हो सकता है? ये ऐसे तो नहीं समझ पाएगा सर, अगर आप कुछ शेयर कर पाए एग्जाम्पल से स्क्रीन शेयरिंग, तो आई बी एबल टू बेटर हेल्प यू। ऐसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप नहीं, क्या। जैसे कि मैंने वहां से जाकर कैनवा में म्यूजिक वाला पार्ट को वहां से हमने वो सेलेक्ट कर ली, देखा वहां म्यूजिक, मुझे बहुत अच्छी म्यूजिक लगी, थोड़ा सा सुदिंग लगी मुझे। उस म्यूजिक को मैंने वहां पर जाकर मतलब उसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसके फिर उसको जब हम कंप्लीटली रेडी हो गया, रेडी होने के बाद देखते हैं तो जो म्यूजिक मैंने वहां पर सेलेक्ट किया था, जिस तरह से मतलब सुदिंग था, वो वहां सिमिलर फ्रिक्वेंसी या सिमिलर टोन का मुझे म्यूजिक नहीं। डॉक्टर जीपी, आई थिंक जब हम इकट्ठे होंगे लाइक आफ्टर दिस, देन यू शो इट, क्योंकि ऐसे जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस इज हार्ड। सामने एग्जाम्पल होगा तो तब देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है। मे बी कुछ आप गलत कुछ बटन दबा रहे हो या कुछ हो रहा है, तो उससे प्रॉब्लम हो रहा है। राइट Like Priyash said, you can share that because we're going to stay on longer even after Priyash is done. So then you can show it and we can go over it for sure. मेरा एक क्वेश्चन है। आपने जैसे अभी शायद शालिनी जी ने पूछा भी था कि हमारे को अलग अलग, वैसे TST इज एज ए लार्जर हेल्थ रिलेटेड हमारा सारा पॉइंट है, बट अंडर द हेल्थ देयर आर सेपरेट निश। जैसे किड्स की बात करें, फूड की बात करें, कुछ लोग फूडी हैं, न्यूट्रिशन है। तो वो जो आपने बताया था कि उनका अलग अलग पूल, वो क्या करना होगा? मतलब अगर सपोज एक तो हम इसी पे अपनी कंटेंट डालते रहेंगे एज लॉन्ग एज जो हमारा TST पोर्टल है, पर उसमें अगर मुझे किड्स स्पेसिफिक फोकस करना है, तो आप व्हाट्सएप पे बोल रहे थे कि सेपरेट कम्युनिटी, या आई डोंट गेट दैट एक्चुअली। व्हाट्सएप पे मान लीजिए तो मैं आपने अपने पेरेंट्स की कम्युनिटी बनाई हुई है, वो पेरेंट्स इसलिए आपको फॉलो कर रहे हैं व्हाट्सएप पे बिकॉज आप उनकी टिप्स दे रहे हैं फॉर बेटर हेल्थ फॉर देयर किड्स। तो आप वहां पे जनरली वही कंटेंट डालेंगे उन्हें, पेरेंट्स को। उन्हें पता होगा कि आप TST एज अ ब्रांड है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो स्पेसिफिक ग्रुप या कम्युनिटी इसलिए ज्वाइन करी हुई है बिकॉज वो अपने बच्चों की सेहत पे काम करना चाह रहे हैं। प्रिसाइसली इफ आई अंडरस्टूड, मैंने क्या किया कि मैंने व्हाट्सएप पे कम्युनिटी पर्सनल नंबर पे बिल्ड किया, जहाँ के ऊपर मैं किड्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, जो मेरा इसमें TST में भी जा रहा है, सेम कंटेंट बट स्पेसिफिक टू दैट ओनली। बट उसी के साथ साथ में कुछ ऐसे भी 10 मतलब मेरे पास कम्युनिटी होगी व्हाट्सएप पे, जिसके ऊपर मैं वेट लॉस का ही कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, दो द सेम कंटेंट इज देयर ऑन माय TST हैंडल ऑन सेम विद द सेम हैशटैग मैसेज, वो जो हमारा रहता है ना। वेरी क्विक एग्जांपल, आपने TST के मेन इंस्टाग्राम पेज पे डाला वो स्लीपिंग वाला एक पोस्ट किया था, राइट? इसमें वो था। नाउ दिस पोस्ट स्लीप वाला कैन गो टू एन एडल्ट। आपको नींद नहीं आ रही, आपको इंसोम्निया हो रहा है क्योंकि आप बहुत टेंशन ले रहे हो, परेशान हो रहे हो, एक्सेट्रा। सेम पोस्ट को आप किड्स वाले ग्रुप में भी डाल सकते हो कि आपके बच्चों को रात को नींद नहीं आ रही, शुगर रश हो सकता है, या उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, या उसमें कामनेस नहीं है। अब देखा, सेम कंटेंट वही है, लेकिन उसका महत्व दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। वो जो ज्यादा समझेंगे ना, जिनके किड्स का कंसर्न होगा, दे विल बी मोर लाइकली टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये मेरे रिलेवेंस है, एंड द चांसेस आर देयर दे विल बी शिफ्ट टू आवर कम्युनिटी देन it will be more likely. So we can create multiple community, 2 or 3 based on our niche into the WhatsApp and bring the traffic from there itself, right? Perfect. Right. Ma'am, you had a question? Your hand is raised. All right. Cool. So second last session, I hope this was also fruitful. We always have a lot of discussions, and I'd like to see a lot of nodding heads, and I hope
मजा आ गया बिकॉज अब अगली बार हम मिलेंगे एक आखिरी बार एटलीस्ट इन दीज सेशंस. ऐसा नहीं, जिंदगी में तो कई बार मिलेंगे, बट द नेक्स्ट सेशन as Hitachi, I'll just bring you up to speed as well. Yeah. Hi, guys. Hi. Sorry, we had another meeting, so I had to skip this one. Really sorry. But I just want to understand two things, Priyash, because it was WhatsApp for business. So I just want to understand that what did we actually tell like just the topics? What did we actually discuss? Because, if you can just tell me that, and then I'll share my view. All right. So I told him how do we create a WhatsApp business account, and within which how you put up your business information, which would be basic your contact information. You do have a catalog wherein if you don't want to be putting up your products, you can put up separate, services, kind of overarching kind of things as a catalog. Yes, so that's what I wanted to touch upon, Loveleen ma'am, that catalog uploading and using WhatsApp for business to sell products is right now not allowed as per the DCS guidelines. We're not thinking of it. Yeah, so that I just wanted to make sure that I wanted to be a part of the session, but I thought I'll join in the end and just make this clear that that is not actually allowed as per DCS. 100%. However, any kind of automation that you want to do, send automatic messages and create a community, all of that is perfect, can be done. Just that selling of products via WhatsApp is still under DCS, like it's not currently permitted. Thank you for We letting us had know. that I discussion would at think that I point wouldn't in want as that well. anyways, because that invites a lot of other negative element also, just like our online shopping's happening. But yeah, for sure. For us, we will use more how Priyash shared with us. Our catalog will be like our fitness community, our recipe, so that will be more of how we'll be dividing it up. Sure. For the final session, Hitaishi, because we deliberately kept it in such a way that it would be an open-ended, and the team's feedback has been that they would want to be covering two things in detail in the next session, which would be the concept behind live sessions, how often they would want to be doing Instagram, Facebook, or probably YouTube live in the future, and the challenges. If I would want to be driving community engagement, what kind of challenges I can put up. So that's one thing. Of course, I'll also be going ahead and showcasing Hootsuite, so that if there are so many people managing, so they'll be able to link it up with it. And just one more thing, if you can have a conversation with Loveleen ma'am as well, because now they know how to look at the insights, both Facebook page as well as that. So if you can fetch that information, ever since we started posting, from which day to what date, what kind of engagement we have generated. So, Loveleen ma'am, either if you could just provide us the access to the business manager, Facebook and Instagram, so that we can have a deeper look at the insights, because it is going to be helpful for us to, analyze whether we have met our KPIs, and for you also, we'll have a detailed report out of the progress that the team has made so far. So if we could just get, I will contact you Add personally. you as one of the managers, the editors on Facebook, then it'll give you access to both, Yes, right? so you can add me and I can, then provide some screenshots, whatever is required from our end to the digital with their team. So yeah. Perfect. I'll do that right away. I will give you my Facebook email ID, on which it's made, because Amber would be different. So I'll just ping you on WhatsApp my ID, and you can just give me the editor access, and from there I can share whatever information digital with their needs. प्रयास जी एक लास्ट क्वेश्चन आप ना मैंने कई बार किसी को सुना था बेसिकली दे हैव रिकॉर्डेड द सेशन लाइव में उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया एंड देन दे कीप ऑन सेंडिंग द रिमाइंडर ऑन ए रेगुलर फ्रीक्वेंसी अब वो पता मुझे नहीं लग रहा व्हेन आई एम लुकिंग एज अ न्यू पर्सन आई कैन सी इट इज समथिंग लाइव व्हिच इज गोइंग ऑन पीपल आर ज्वाइन ऑन दिस वेबिनार के लिए, राइट? वेबिनार नॉट द webinar is something when the live is done. Live session. They have recorded one time. Instagram live. They have recorded. See, अभी मैंने आप जैसे दीदी ने बोला था कि लाइव पे जाएंगे, तो लाइव में किसी बंदे ने जाके 1 घंटे का टॉपिक कवर किया, अब वो सेशन रिकॉर्ड हो गया. ना जब भी क्या होगा नेक्स्ट टाइम पे जितने भी पार्टिसिपेंट ने उसको प्रमोट किया कि ठीक है इफ यू वांट टू नो समथिंग मोर कम एंड जॉइन आवर वेबिनार और समथिंग. अभी क्या है कि वो रिकॉर्डिंग चलती है सेम सिनेरियो सेम थिंग रेप्लिका एंड इवन देन पीपल लोगों को तो पता लग रहा है कि ये तो वही पीछे से चल रहा लाइव. तो वो इट इज मोर ऑफ ए
काइंड ऑफ जिसको मैं समझ सकता हूँ डुप्लीकेबल और समथिंग, तो वो कैसे करते हैं? दैट्स अ क्वेश्चन। ये प्राइमरली आपके एक्सटर्नल टूल्स ही इस्तेमाल में आते हैं, जैसे कि देयर इज वेबिनार जैम, देयर इज समथिंग कॉल्ड getresponse.io। वहां पर होता है कि आप प्री रिकॉर्डेड सेशंस या प्री रिकॉर्डेड वीडियोस को यू कैन रन देम एज एन ऑन डिमांड वेबिनार और ऑन डिमांड लाइव सेशंस, राइट? तो ये वो तरीका है अगर आप उसको वेबिनार में लाइव करना चाहते हैं। अदरवाइज एक और आपके पास सॉफ्टवेयर आता है OBS करके, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है OBS। उसमें हम क्या करते हैं, हम उसको रन करते हैं, उसको फेसबुक लाइव के साथ लिंक कर देते हैं, उसको यूट्यूब लाइव के साथ लिंक कर देते हैं, और उसमें जो सोर्स होता है हमारा वीडियो का, रादर देन द कैमरा, हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन को शेयर कर देते हैं कि ये हमारा सोर्स है, और जो रिकॉर्डेड वीडियो है हमारा पहले से, जिसमें हमें लगता है सब लाइव चल रहा है, वो प्ले कर देते हैं। तो वो यूट्यूब पर लाइव जा रहा है, फेसबुक पे लाइव जा रहा है, इंस्टाग्राम पे लाइव जा रहा है, लेकिन आपने एक पुरानी रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। तो वो OBS ओपन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, उसका इस्तेमाल करते हैं वहां पे। Priyansh, I think Manoj ji is asking one question. कुछ ग्रुप में ऐसे है कि आप जब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका वो रिप्लाई क्या करते हैं, उसको रन कर देते हैं, और आपको लगता है जैसे लाइव वो आपको आंसर दे रहे हैं। वो शायद Because we have मैसेजिंग की also बात seen the करते हैं, same. राइट? यू टॉकिंग अबाउट मैसेजिंग मनोज सर, या लाइव? नहीं, मैसेजिंग का कैसे रहता है कि एक तो ऑटोमेटेड मैसेज मैसेजिंग तो होता है, ऑटोमेटिंग वाली मैसेजेस आ जाती है। तो वो तो जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने किसी के साथ कनेक्ट किया, तो दे विल कीप ऑन सेंडिंग मैसेजेस टाइम टू टाइम, वो तो ऑटोमेटेड फनल वाला रहता होगा। मैंने जैसे वो जो सर कह रहे हैं MD आदर सर, वो वही बात है कि मेरे क्वेश्चंस के हिसाब से द मोमेंट आई प्रोब देम दे विल कीप ऑन आंसरिंग मी कि आप इसका ये है एंड लाइव इनटू आवर सेशन दे विल आस्क अगेन कि आप यहाँ इसको इफ यू वांट टू नो मोर, आई मीन यू हैव मोर जॉइन माय लाइव सेशन, वो अगर आप करना चाहें तो वो भी थर्ड पार्टी टूल के जरिए होता है। अगर आप चेकआउट करना चाहें तो मैनी चैट करके, MANYCHATS, मैनी चैट। Oh, I see. That's not in this. हाँ, Third party tools. ये सारी चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल पे आप सोचे कि तब हम आए, हाँ, सब में आपको सब्सक्रिप्शन कॉस्ट भी देना पड़ता है, सेटअप कॉस्ट, और मतलब काफी सारी चीजें हो जाती है। जी, नहीं, मेरे लिए ये क्वेरी था, मतलब आई सॉ समथिंग गुड, तो इसलिए मैंने पूछ लिया, दो इट इज आउट ऑफ द सिलेबस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। that is very good curiosity sir, that's how we have to be। पर जब आप ग्रो करेंगे तब ये सारी चीजें काम आएंगी, तब आपको याद आएगा, अरे मैंने प्रियश से क्वेश्चन पूछा था, उसने कुछ तो उटपटांग जवाब दिया था, चलो कर लेते हैं। अब आप हमारे साथ तो रहेंगे हमेशा। Cool, ठीक है, so we are clear on the agenda for the next call, right? The last session has to be extremely fruitful, and we have to have everyone be happy. So Loveleen ma'am, within this week also, if you feel like while you are connecting with the team, and if you feel that there is anything specific that we need to cover in the last session, please do let me know so that I can communicate the same to Digital with their team, and Priyash will be, addressing that also. So if anything, pending, like you think that has to be a special focus, please let us know. Yeah, Priyansh, can you just touch the personal website? Some people are getting on the personal website, people are getting that just थोड़ा सा एक reference किसी एक उसमें दे दे। website, हाँ यार, कुछ लोगों ने क्रिएट करा। So they're talking about the web pages, I think, that Yeah, web the pages, communities web pages. have, like the microsite we had. Sir, we next time in the next session we will have an example. Like I'll share with Priyash whatever people are creating, like other Amway distributors that they have. I'll get back to like we'll definitely touch उसको हम करेंगे next session में. But एक बार internally be taking alignment from the legal and Simrat. So what all we can share, we'll definitely have examples, and he can touch upon how to create or probably what are the benefits. तो वो हम आपको next session में थोड़ा उसके बारे में brief दे सकते हैं. That's not a problem. I'll have noted. I'll have a chat internally and then we'll put it. Thank you so much. Thank you, sir. Right, Ashish. Yeah, Priyansh, going back to the collaboration thing again. So I
collaborated an account with the post that I've made, I mean, few days ago, but this did not show up there उनके दूसरे account में. But मुझे ऐसा लगता है, I just the question I want to clarify कि अगर मैंने collaboration में let's say आपका नाम डाला on the side, to accept it. On the other side, I have to accept. I agree that I'm aware, but the other point is मैंने collaborator में आपका नाम डाल दिया, on the side मैंने tag भी आपको कर दिया. So do we have any chance कि वो collaboration वाला point हटा देता है? Because I tried that और collaboration नहीं हुआ उस नहीं, case. अगर आप कोलैबोरेटर भी ऐड कर रहे हैं और उसमें पोस्ट में भी टैग कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम ऐसे नहीं वन ऑफ द टू नहीं चूज करेगा, वो दोनों तरीके से जाएगा. अच्छा, तो that should not be, there could be either they would not have accepted, for example miss हो गया होगा in terms of accepting the collaboration request and tag वाला approve हो गया होगा, so that could be the scenario. ठीक है, thank you. Yes, Siddharth. या प्रियाश, एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे फेसबुक के ग्रुप्स कुछ मैंने उसमें ज्वाइन किया था मैंने, उसमें मैंने 1-2 ग्रुप्स में देखा जैसे करीब 30-40 फॉलोअर्स 40,000 फॉलोअर्स थे उसमें. बट वंस आई गो इनटू द डिटेल, उसमें जाता हूँ मैं ग्रुप के अंदर, वहां मैं आगे देखता हूँ कि उसमें बहुत ही लिमिटेड नंबर दिखाता है वो. मतलब वो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया कि बाहर के मेन पेज पे उसमें काफी ज्यादा फॉलोअर्स दिखाता है, और जब मैं उसमें अंदर जाता हूँ तो उसमें बहुत ही गिने चुने कुछ 50-100 ही दिखा रहा था वो. कहाँ वो पर मैं थोड़ा सा मतलब आप कंफ्यूज. लाइक्स में देख रहे हैं, एंगेजमेंट देख रहे हैं या क्या देख रहे थे? मैं ग्रुप के डिटेल में मैं जब जाता हूँ, जैसे ग्रुप का नाम है, मेन पे होम पेज पे उसका दिखाता है फॉलोअर्स 30,000 40,000 फॉलोअर्स. यस. हाँ. सो उसमें जब मैं डिटेल में ग्रुप के इन्फो पे जाता हूँ कि उसको कौन मैनेज कर रहा है, क्या डिफरेंट पोस्ट हम डाल सकते हैं उसमें, खाली एडमिन तो नहीं डाल सकता, वो डिटेल देखने के लिए जब मैं उसमें जाता हूँ तो नीचे उसमें एकदम बॉटम ऑफ द पेज पे आता है दिस मच फॉलोअर्स, बहुत लिमिटेड नंबर होता है वो. तो आप वो चेक कर लीजिएगा, इज इट दिस मच फॉलोअर्स और इज इट दिस मेनी कंट्रीब्यूटर्स या नो फॉलोअर्स. नहीं, तो फिर वो पूरा मतलब वो सही मेट्रिक नहीं है. सही मेट्रिक वो है जो बाहर ग्रुप में आपको दिखा रहा है, जो 30 to 40,000 वाला है. तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि उसको फेक किया जाए वो नंबर्स बाहर? नहीं, वो फेक नहीं कर सकते. इसमें ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब जो एडमिन है वो हमारे को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि वी कांट सी द नंबर्स और द, देयर कुड बी सर्टेन वो रूल्स हैं कि आप एज एन पर्सन कितने लोगों को देख सकते हो या कितना कहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होता है, अगर वो प्राइवेसी सेटिंग्स हो. लेकिन जो नंबर आपको बाहर दिख रहा है वो ट्रू नंबर है, क्योंकि वो फेसबुक आपको दे रहा है. वो ग्रुप मेंबर कोई या ग्रुप एडमिन फज नहीं कर सकता कि है तो 100 लेकिन दिखा रहा हूँ 30-40 हजार. ऑप्शन ही नहीं है वो करने. और वैसे भी probably they might want to keep their contact confidential, so that's the reason they are giving the numbers. Total तो दिख रहा है, वो तो Facebook दे रहा है, but probably they have put some rules कि हाँ इतने लोगों का प्राइवेट ग्रुप, इट्स या हाइपर सेटिंग्स करी हुई उन्होंने. And hopefully we have to join public groups only, na? Yeah. Join public groups, and as I said, वो 15-20 ग्रुप्स आप देख लीजिए एज अ कम्युनिटी कौन से होने चाहिए जो हाईली आपको लगते हैं लुक्रेटिव है जहाँ पे हैं, एंड देन एवरीबॉडी जॉइन देम. गो एज अ प्रॉपर गैंग ओवर देयर एंड भर भर के एंगेजमेंट करें वहाँ. Okay. Right. ठीक है. All right. So thank you everybody. Thank you so much. Ma'am, do you want to take the host access from here? Yeah, please. Thank you. Do you mind if we stay on for some time, or should I go on my ID? Priyash, ma'am asked a question that do you mind her staying here or she can go on an ID? No, you can stay over here. That's Yes, fine. yes. Okay. Thank you. That's fine. Thank you. Thank you. Thanks, everyone. Thanks. Thanks, Hitashi. Thank you. Bye. So I've given you the host access, ma'am. I hope Thank that's. you. Thank you. Bye. Bye, everyone. That was an awesome session.